सो गाइस, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है? बिल्कुल सही, आईटी कंपनी सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। तो अगर मैं बात करूँ गूगल में, गूगल जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी पता है? अराउंड 60 लाख रुपए सालाना, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया में रह करके आप 60 लाख रुपए कमा सकते हो। इवन सबसे ज़्यादा जो सैलरी दे रही होती है वो मेरे नज़र में अभी तक फेसबुक है, जो आपको 1 CR के आसपास सैलरी दे रही होती है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को किस तरीके से इन वन शॉट इसी वीडियो के अंदर आप खत्म कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, इस वीडियो में जानेंगे। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि मैं बाई प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और अपने फ्री टाइम में ये पॉडकास्ट करता रहता हूं। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जिनमें जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके साथ मैं एक पॉडकास्ट करता हूं और आपके लिए गाइडेंस लेके आता हूं कि अगर आप गूगल क्रैक करना चाहते हो तो किस तरीके से क्रैक कर सकते हो, क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए और गूगल क्रैक करने के बाद आपको जो सैलरी है वो कितनी मिल सकती है। जो मैंने अलग अलग पॉडकास्ट कर रखे हैं गाइस, वो सारे पॉडकास्ट में इस वीडियो में मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अलग अलग मेरे चैनल पर जाकर देखने की जरूरत नहीं है कि यार ये वाला कहाँ है, ये वाला कहाँ है। सब मैं टाइम स्लैब के अकॉर्डिंग इसी वीडियो में मर्ज करके आपको दे दूंगा। अगर गूगल का देखना है तो सबसे पहले गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, कुछ इस तरीके से मैं आपके लिए डिफाइन कर दूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, देरी क्यों कर रहे हो? देखो इस वीडियो को और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो डेफिनेटली लाइक करो और सपोर्ट करो यार, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट करोगे तो यार ऐसी कूल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लो, फिर वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी या कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताना, जिससे कि मुझे पता चले कि यार मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है और आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है। वीडियो देखकर आप क्या सीखे, वो आपको क्या इंप्रूव करना है, जिससे कि आप इन सब कंपनी को क्रैक कर सको। तो चलो वीडियो देखो अच्छे से और बताना मुझे अपना फीडबैक। So hey guys, welcome back to another interesting podcast. Today we have Dinkar. She will tell you like how you can crack Google. So आप लोगों की यार ड्रीम कंपनी है Google, और जो दिनकर जी हैं वो HD1 नहीं 2 नहीं 3 हैं, तो उनके पास तगड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो यार वो तगड़ा एक्सपीरियंस आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चल रहा होगा, और आपको अगर लग रहा है ना यार कि गूगल में किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करते हैं, कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंटरनेट पे ऐसे यार बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक वेयर शुड आई गो एंड कहाँ से मुझे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यार वो पूरा लाइक आप कह सकते हो कंप्लीट रोड मैप आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल जाएगा। तो यार लगे रहो इस पॉडकास्ट में, बिल्कुल एंड तक देखो। और चलो फिर इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। And welcome, Dinkar ji. Thank you so much for coming. And over to you. Yeah, thank you, Samir, for this introduction. I'll add to this. My name is Dinkar, and I have around 10 years of experience in working with companies like Samsung, Paytm. I have experience working with the startups also like Live.Space, and recently I have joined Google. So basically, I have worked with companies of all the sizes. Thank you, sir. And sir, like suppose now I'm watching this podcast. Now I'm in college. I can be first year, second year, third year, or final year, and I want to join Google. Then what will be my first step? So my understanding is, if you are in college, you need to understand. Uh, you need basically, this is your goal to be in Google, or instead of Google it might be another company. So I'll talk about Google. What you can do, you can take this as a goal and you can divide it in basically tasks. So the very first thing is you need to get an interview call, and without getting an interview call you cannot crack Google. How to get an interview call can be a separate discussion, and then after getting an interview call, how to crack interview is a separate discussion. So we can talk about both of them. Sir, uh, please. Basically, if you want to get an interview call, there are multiple ways. So starting from, it depends on, I'll say, the number of interviews happening in that company. So in companies like Google,
the number of interviews, sometimes they are high, sometimes they are less, sometimes they are doing, let's say, 1,000 interviews per month, sometimes they are doing 10,000 interviews per month. So sometimes it's in your hand. Maybe if you are eligible, you have visibility to recruiters, but you might not get interview call because they are not doing too many interviews. So it's not your fault. What you can do is you can do things that might get you interview call, but then it again depends on factors that are not in your control basically. Mm. So keeping it aside, like how many interviews happening in the company, now coming back, what you can do is you need uh, to be visible as a strong candidate to recruiter. So Mhm. there are two things like visibility and a strong candidate. Okay. And in my experience, I have seen people doing this by, all these steps are basically not mandatory. Anyone can take any path. Mhm. So the very first thing I feel is, if you are in a good college, you automatically get that visibility. So if you are in a good college, say IIT, NIT, or any Mhm. any good college, any tier one college, you will get that visibility automatically. That is a So plus point. that is a plus point for getting interview only. I'll not say that is giving you any other benefit. Mhm. Yes, sir. Other benefits you get because you are in that environment, you automatically get other things. But the Mm. first thing is visibility. So suppose if you are an interviewer and you want to hire a candidate, obviously you will want to go to a place where there are high chances of getting a candidate. So people sometimes say like tier 3 colleges also have good candidates. I agree, but if you see the number of good candidates who might be a good fit for Google are less as compared to other tier 1 or tier 2 colleges. Oh. So like Mm. in tier 3 colleges, if you see, in my batch, if I see, people are not in software, they have changed fields. I mean, Oh. every kind of people are there. Mhm. But in tier 1, uh, the density of talent is greater than the density of tier 3 students. So for an interviewer or for a recruiter, it is easy to find talent there. Apart from being in a college like this, that's not in your hand. If you are not in a good college, if you are in a tier 2 or tier 3 college, what is in your hand is, uh, I have seen people doing competitive programming. So uh, being a competitive programmer is a different thing. I mean, it's your hobby. It might be because of your passion, your interest, but at the end, it gives you a visibility. For example, if you are participating in Google Code Jam, that's a annual coding competition by Google, and the purpose of this competition is to spot potential candidates. So if a candidate is advancing to next round or to final rounds, it's easy for them to spot candidates for interview because they know that these candidates might crack interview. One of the ways. But being an expert in competitive programming altogether is a different game. It's like, to crack Google interview, you don't need to be an expert in competitive programming. That's a different sport, that's a different path, but that gives you a visibility. One thing. Another thing might be keeping your profile updated on LinkedIn, Mhm. because as I said, when sometimes more number of interviews are happening, apart from tier 1 and tier 2 colleges, recruiter will uh, look for their options to find candidates. So one can be through LinkedIn. Another way I feel is to get a referral. If you know someone, you can ask them to give you a referral. So Yes, sir. these are the four ways. I think if I remember any more ways to get an interview, I'll talk about that. Sure, sir. Thank you, sir. 4 ways are very useful. Someone will follow these steps, then there is a lot of chances to get a call from HR. And sir, like we know
now we knew how to approach, like how to get calls, and like where should we learn coding. So Very confusing topic. yeah, it's very confusing topic. Sometimes people want to be an expert in competitive programming, Mm. and they think like if I Deeply dynamic read, program. Yes, yeah, sir. yeah. If they think like if they be an expert in competitive programming, might be on top coder if they become a red coder, or I don't remember those uh, color codes. But people think like if they become a red coder or yellow coder, they might be a greater chance to crack the interview. Obviously, there will be a greater chance if you are that much expert, but that much effort is not required, honestly. So, what is required is like similarly, if you are in a tier 1 college, apart from giving you a visibility and other things, tier 1 college gives you many things from life's perspective, from career's perspective, opportunities, everything. Similarly, competitive programming, apart from cracking interviews, there are many things. So cracking interview is a subset of being an expert in competitive programming, but that's not required. That's not mandatory. I checked my lead code after cracking Google interview, and the total number of questions I solved around, I don't think it was near 100. Yes. Yeah. So one thing you need to understand is you need to get your basics clear, very strong. And from where you can do that, it's your choice. You need to find correct resources wherever you find comfortable understanding that concept. So uh, my path was like when I was in that situation where I was looking for answers like how to be an expert in coding, how to crack interviews like Google, I used to reach out to people. So one way is to reach out to people. You can ping people on LinkedIn. Maybe you ping 50 people, one of them will definitely reply. And if they don't, there is no harm to you. You can reach out to people with your question. So I used to do this, and after I got some understanding, what I did is I took a basic data structure book. So I read a topic from there and read it between lines. Every word in that book about that topic. Suppose if you are learning about a BFS maybe, Mhm. so go to that page directly. You don't need to read the book page by page. That will Mm. take a lot of time. You just go to that topic, read entire topic, every single word, understand the meaning of that word, and do it uh, using a good book. I will say, not Mhm. don't waste your time on a low quality book. Yes, sir. I don't know which book is bad, but I certainly know which book is good. So two books I followed. One is Corman. Corman is very famous. Introduction to Algorithm by Corman. Uh, I think you only need this book if you need to understand basics of data structure and algorithm. So go to that topic, read every single line, every single word in that heading, Mm. make it clear, and then try to solve questions on that topic. So now coming to solving questions, there are examples in the book also. There are exercise questions in the book also. First you do that, you make your concept clear, and then you can head to other sites like there are many websites, LeetCode, Geeks for Geeks. There are I used SPOJ. SPOJ is there. Code Forces. Yeah. All these website you can uh, filter questions by the topic. So you learn a topic, you go to that website, you solve some questions on that topic, and see Yes. like what you have learned. So this is what I followed. Till now I understand how, like, you suggest one book, Yeah. and through that book we can prepare for DSA, and you have also like tell told the platform like Lead Code or Geeks for Gigs, so where we can practice those questions. Then after that, like suppose sir, now we have opportunity, like
we have received call from the Google, and how many interview rounds there, and which interview question can be asked, like sir. Yeah, so like once you have prepared, once you are good with your concepts, then you can focus your preparation towards interview. Like there is a particular structure to the interview. So I remember a day before I shared my documents when I was giving interview to Google. So I listed down my findings, like what they are looking for, and now I also take interviews, so I know like what specific attributes we are looking for when we are taking interviews. So once you are done with the basics, what you need to do is you need to prepare yourself around those attributes. You list down all those attributes. How to get those attributes is you can talk to your recruiter. He will tell you what is required. Few things I can tell you is you need speed, because in Google interview it's a 45 minutes interview, single interview, and in that interview few minutes go in setting up interview, introducing yourself. So it's your responsibility to navigate the interview efficiently. If you have any doubts, cross questions, you need to ask that. So I'll say, like, you need to structure your preparation around the interview format of Google, and for that you need to practice. On a software engineering position, apart from behavioral or leadership round, depending on how senior level you are coming, everyone has to pass data structure round, and Google calls it general cognitive ability. So it is like uh, GCA. If you search this term on Google, it's your cognitive ability to solve problems, to reason about the problem, to reason about the solution or the things we are talking about. So in a 45 minutes interview, they expect you to write uh, working code, Mhm. and you need to write a readable code also. So you need to take care of variable names, structure of the code. It's not like you can take ijk for the for loop and keep writing your code, take any random variable. You need to take meaningful variable names, method names, or anything that can make your code readable, like make functions for small functionalities. That's one. Readability I have talked about. You need a working code. So they expect you to solve a medium level question, sometimes an easy question. I have not seen hard questions very frequently in Google interviews. For me also and for others also, I take interviews. The so the questions are like you will solve an easy or a medium question, and depending on uh, how much time demanding the question was, they might come up with a follow-up question or might be a different question in the same round of the interview. So in 45 minutes, you say like you need to solve two easy questions, two good level easy questions. It's not like Okay. very easy questions, but yeah, easy to medium questions. Mm. You need to solve two questions. So uh, you are given a question. The format is you first describe, you first Mhm. clarifying questions, because it is almost always a case that they will give you a statement that if you start solving, you will end up assuming things. So you need to ask clarifying questions. You define the constraint on input everything, don't assume anything, and then you give your optimal solution, whatever you are thinking, and just don't give your solution. If you are reaching to the solution by thinking something, just keep talking about that. In because sometimes it's not about if you can reach the solution, if you can write a working code. It's also about how you are reaching to the solution, what you are thinking. So because the goal is to check your general cognitive ability. So
you give the solution, you talk about the time complexity, and it's not like you talk about time complexity, you also need to reason about the time complexity, why the time complexity is n or log n. Because you can read in the book and then you can tell the interviewer that the time complexity is this, but then you need to also reason about that, you need to prove that why the time complexity is this. And then going forward, uh, you ask that you are going to write the code, you Mhm. write code. Once you write the code, interviewer will check the code, but before interviewer checks the code, it's your responsibility to check your code and find anything Yeah. that you have left by mistake, because most of the times we are done, we will tell interviewer, okay, I'm done, and they will find an edge case missing or some syntax missing or anything. So it's your responsibility to check your code, do a dry run, check for the readability, check for all the test cases are passing. And sometimes we think like we have solved the question, we are good in the interview, Mhm. but interviewer is mostly expecting to ask a follow-up question on top of that, Okay. or they are planning to ask another question. So most Mhm. of the it happens like candidate, if they are not aware like Google is expecting to ask two questions in an interview, they might feel they have done good. Okay. Most of the times, you need to keep this in mind, like if you have an easy to medium question, you need to solve that in 15 to 20 minutes so that you are left with time for another Mm. question. Format and all the rounds, I think three data structure rounds are there apart from screening round, and they Mhm. have the format. Okay. In 3 rounds, they will ask only regarding the data structure. Yeah, the same format in all the three rounds. And after that, sir, there is a HR round or something. After that, there is a behavioral round for entry level positions. For senior positions, there is a leadership round also. The behavioral round in Google is called Google. I think I don't remember the name. It's What? Googly. I don't remember. Mhm. In that round, they will ask you questions to check behavioral things. Mhm. So those questions are in two categories. The first thing is imaginary situations, like if you were in that situation, what will you do? So Mhm. like that. Another category of question here is your past experience. Uh, have you been in that situation? And if yes, how did you manage that? I can categorize it like, are you actively seeking feedback about you? Do you care about the feedbacks given to you? To check this, I might ask a question. I can give you a Mhm. question, like, tell me about something, talk Okay. about this situation. And once you start talking about that, I Mhm. need to find out answer to this question, like how do you react to feedback? So I might say, okay, uh, Samir does not listen about feedback at all. That's Mhm. that's worst rating. The best rating can be Samir proactively looking for the feedback himself without anybody telling him. He reaches out to people to get feedback about him and he actively works on the feedback. That can be the best rating. Mhm. An Yes, sir. average rating can be you listen to the feedbacks given by others and you work on that. So once you get the attributes, and you need to basically have a lot of past scenarios in your mind that Mhm. fits around those attributes. So you can say, this is how I used to be, this is how I used to handle situations, and Mhm. you need to reflect those things. And sir, like suppose uh, what will be the work culture when the work culture is very great as a SDE? Like what facility will get from the Google and yeah, and work culture also. Are we talking about culture or anything else also here? Yes, sir. Work culture and like what benefit will we will get from the Google as a SDE? I Like think benefits mhm, are standard. You can find them anywhere on the internet. Like mhm,
that food, transport, and other benefits, salary, medical, all those things. Mm-hmm. I'll talk about the culture. So I have been for 1 year in Google, and I have heard a lot of things about Google culture by experienced people also, and less experienced people also. So those things that I heard about Google from more experienced people, I'm yet to experience them. Mm-hmm. But the things I have experienced till now are according to Google culture, I'll say whatever I expected. So Google cares a lot about you. When I say this, it does it by taking care of your balancing between work and family. So this year I completed 1 year and I went on a paternity leave. Like few months after joining Google, I went on leave, and I was kind of worried like my performance will be impacted. But Google expect you to go on that leave, take care of of your family. Oh, So you don't need to worry about that. nice. And Yeah. sir, like, what is working timing and working dates? Is now still hybrid or like? Yeah, it is still hybrid in most of the teams. Some teams are might be remote. I don't know about that, but yeah, there are teams that are remote. I'll need to check, but most of the teams are hybrid, and few teams are totally on site because of the nature of work. Maybe they need Mm-hmm. to come to office daily because of the structure of their work. Maybe a data center team or hardware team, they need to come to that place. But most of the software engineering positions are hybrid. It's hybrid for most of the teams, and the timing is not fixed. Like you can choose your working hours, but you need to take care like you are available there when teams are meeting for discussions for the meetings. So generally some people log in at 9, 10, 11. Some people at 8 also, and then they log off at 4, 5, 6, 7, 8, and any time. Mm-hmm. But you need to take care like you are working 40 hours or 35, 40 hours a week so that you can complete your project or your work. Sir, now to the important and main way. What will be the starting salary in Google? And if I have experience like 2 years or 4 years, then I'm switching to Google. Then what like I can expect? Uh, Before coming how much salary Google offers, honestly, I don't have a number right now. Maybe we can discuss how we can find that number. But before that, I want to talk about is Google always takes care of your salary for that experience or the band you are coming in. So suppose if you feel like currently you are at a low salary in a company and going into Google might give you a loss in the sense like you might expect switching companies give you 30% hike or 50% hike, but that's not the case with Google. So if a person is coming to Google at a certain position and the range that range in that range in that position is making your salary double or triple, you will get that. They won't take the benefit of your situation. Like if you are at 4 LPA in TCS, then you will get 30%, 40%, or 100%. If you are going into a band, the salary is 20 lakhs, you will get that. So that is first thing. And now talking about the numbers, how I used to find to get an idea about numbers is one thing you can go to blind. On blind, people are discussing about salaries. So you can find a lot of posts where people are talking about salaries. If you are aware about blind, you No, might sir, know I it. don't know about it. So blind is an anonymous version of LinkedIn, you can say. Okay. So you cannot see people's name there. You can post Mm-hmm. any, you can comment on anything, but people's are anonymous. You cannot see them. The name is not visible.
So people talk a lot about culture, salary, almost about anything. In open. Because they know like people cannot identify Mm. them. Another tool, I mean, Blind is a very good tool. Another tool might be to get labels.fyi. There also you can get an idea. Because honestly, I don't have a number in my mind. I don't know. The I can make a guess like if you are coming to an entry level position, Mm. you might get something around 15 to 20 LPA as a Okay. fixed Yes, sir. salary. Yeah. And then you have stocks and other benefits. If you are coming a more experienced person on a higher position, Mm. like I'll talk about level one. If you come at level one, suppose it is called L3 in Google, you might get as a fresher something around 15 to 20. Again, I'm making a guess, and if Mm. you're coming to a next level, suppose L4, the second level is called L4 in Google. Depending on number, because L4 is a huge band, so people with 4 years experience also come to L4. 8, 10 till 10, 12 years they come to L4. So that band might be 30 to 50 fix, might be. Yeah. Cool. And yeah, sir, it's very interesting. And sir, if I say, it, uh, please give some advice to some students who wants to join Google, like we can say summary type of this video. I'll say just focus on two things. Again, as I said in the beginning, and to do those two things, like get shortlisted for the interview and to crack interview, you don't need to put too much effort of your college life. Like you have 4 years in your college, Mm. and 4 years time is a very good time also, and I'll say too much time if you do these two things only. Like Mm. being good in data structure, I feel it should not take more than a semester or two. Mm. So you should have other things also in your college life, like Mm. rest of the years of your college life. If you want to prepare for Google, take that time, and you should. If I say it should not take more than a semester or two, some people might feel demotivated. Like if they might say like, "Am I slow?" Mm. So one of the uh, one of my relatives, I was guiding them about software Mhm. jobs. I gave them a topic, and I asked them like just finish this topic in a week or two. Mm. They did not call me again. They said they felt very demotivated. Like how can they finish this in a week or two? So I'll say like take your time. This is just an example to finish it in a semester or two. But doing on just like being good in data structure should not take 4 years of your college. That's my point. So there are other things in college. There are other things you can plan like higher studies, other companies. Apart from data structure, also there are many subjects in computer science you might be interested into. Thank you so much, sir. Thank you so much for your timing, sir. Also, guys, you will get very useful information to this podcast. If you get, then like and subscribe. And thank you so much, sir. Yeah, thank you, Samir. Thank you for having me. सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट गाइस ये वाला पॉडकास्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुडे वी हैव ऋषभ सर माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है सो ये यूएसए में सर है तो सर ने पता है मास्टर्स डिग्री भी यूएसए में करी है और वहीं पे ही माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन कर लिया है तो अगर आप सोच रहे हो कि भैया मुझे स्टडी करनी है यूएसए या कनाडा में या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन है होता है इंटरव्यू राउंड्स तो आपको पता है कि इतने राउंड्स होते हैं बट उनकी प्रिपरेशन कहाँ से करते हैं वो सारी चीजें आज सर हमें बता रहे होंगे सो होपफुली ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा उससे पहले यार नए हो तो लाइक वगैरह कर दो फिर आगे बढ़ते हैं सो वेलकम ऋषभ सर ओवर टू यू सर
Thank you, Samir. Thank you, Samir. Um, yeah, it's good to be here and talking to people. So, I'm Rishabh Khanna, and I did my bachelor's in 2000 between 2012 and 16 in computer science. और मैं अंबेडकर कॉलेज से पढ़ा हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है ये। अब ये एनएसयूटी का हाँ, ईस्ट ठीक है कैंप सर। बन गया है, जी गीता जी। कॉलोनी। तो सुन के अच्छा लगता है कि पुराना कॉलेज अब नाम हो रहा सही है। बात है। हाँ हाँ हाँ। बट हाँ, हमारा लाइक एलुमनाई नेटवर्क भी काफी अच्छा था। तो अच्छा अच्छा कॉलेज के बाद मेरी टीसीएस में प्लेसमेंट हो गई, एंड अच्छा। उसके बाद टीसीएस में थोड़े टाइम काम किया। हम्म फिर एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, O9 सॉल्यूशंस करके, हम्म। उसमें काम। और उसके बाद हमेशा से मन था मास्टर्स हाँ। का, तो मास्टर्स करा। और उसके बाद जॉब लग गई माइक्रोसॉफ्ट में एज अ सॉफ्टवेयर। वाह। राइट नाउ आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के अच्छा। लिए। वाह। फुल स्टैक ही है, थोड़ा बहुत फ्रंट एंड और मोस्टली बैक एंड। तो या दैट्स अबाउट इट। कूल सर। सो सर थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे ही आपकी, जैसे कि यहाँ पे आप बता रहे थे कि टीसीएस में आपकी जॉब लग गई थी बैचलर के बाद, देन आपका मन था कि आप यूएसए में स्टडी करें, तो वो जो प्रोसेस था किस तरीके से, थोड़ा उसमें थोड़ा सा बताइए। तो मैं उसमें यहाँ से शुरू करता हूँ कि मोटिवेशन कहाँ से आई। हाँ बिल्कुल। तो क्या है, कॉलेज में अंडर ग्रेड सब इंजॉय कर रहे होते हैं, हाँ। सबको करना चाहिए। तो पहले 3 साल हमने इंजॉय किया। ओके। तो फोर्थ ईयर में जब आए और जब जॉब प्रिपरेशन शुरू की, पढ़ना शुरू किया, तब लगा कि यार ये चीज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमने पिछले 3 साल बर्बाद कर दिए। ओह। तो मास्टर्स की मोटिवेशन आई कि ठीक है, एक बार मास्टर्स करते हैं। हम्म, और मास्टर्स करने के भी फिर अलग अलग हाँ ऑप्शंस है। एमबीए कर सकता है कोई, इंडिया में ही मास्टर्स कर हाँ। सकता है कोई मास्टर्स। पर उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी कि करना अच्छा। क्या है, कहाँ जाना है। और एक डिग्री तो ऑलरेडी हो गई है, राइट। हाँ। और तो ये भी था कि कल को काम करने गए तो काम नहीं पसंद आया तो फिर क्या होगा। हम्म। तो एटलीस्ट तब मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं मास्टर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सीधा बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने चला गया, तो मास्टर्स भी अगर सेम फील्ड में हो गई, तो मैं आई एम फॉरएवर सही। वाली बात, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब बहुत ज्यादा हो गई है। हम्म, तो एमबीए की कोचिंग वोचिंग उस वक्त ली, और अच्छा। ये रियलाइज हुआ कि कैट नहीं निकलेगा। बहुत हाँ। ज्यादा मेहनत है, और सबका अपना होता है, कोई कर लेता है कोई नहीं, हाँ टैलेंट। सही बात। सही बात। तो सबसे ढूंढना है कि अपना टैलेंट कहाँ है आपका। हाँ और बिल्कुल। इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था पढ़ने का, वो कैट अच्छा का अच्छा। एग्जाम देने का मन हम्म नहीं करता था। टेक्निकल साइड इंटरेस्ट था। हम्म, तो उस वक्त ये हुआ कि जीआरई दे देते हैं। हाँ 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 जारी। सबसे पहले ये है कि इंडिया में भी मास्टर्स होती है जिसमें गेट देना है। हाँ। तो गेट प्रिपरेशन काफी टेक्निकल है और काफी स्ट्रेसफुल है। हम्म हम्म, मैंने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने गेट दिए, जिनसे गेट से बात हुई, प्रिपरेशन जो कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि काफी कंपटीशन है, रैंक अच्छी लानी है। तो बट कॉलेज अगर अच्छा मिल गया तो फिर अच्छा ब्रांड लग हाँ। जाता। मेरे को इस बार ये था कि अगर मास्टर्स इस बार करनी है तो फिर अच्छा ब्रांड एक बार ले लेते हैं, हम्म क्योंकि अभी अच्छा कॉलेज था, पर और हम्म। अच्छा एक बार ले लेते हैं। ऐसे ही प्रगति होती है ना। विकास। हाँ। तो उस वक्त गेट का नहीं हुआ, पर हम्म, जॉब लग गई थी उस वक्त टीसीएस में कैंपस से अच्छा ही। अच्छा तो अच्छा। फिर ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी पहले हम्म जॉब करेंगे। जॉब हम्म में देखेंगे जॉब में क्या हुआ है, क्या इंटरेस्ट बैठ रहा है, किस अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करके देखेंगे। हम्म, जहाँ इंटरेस्ट आएगा वो वाली मास्टर्स चुनेंगे। हाँ सही है। Yeah. तो और मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि मेरे बैच में जब मैंने मास्टर्स किया तो डायरेक्ट बैचलर से आए थे। हम्म, कुछ लोग ऐसे हैं जो आ गए हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो अच्छा। उनको मन नहीं करता है कोडिंग करने हम्म का। हम्म, तो मैंने कई बार पूछा उनसे कि तुम मास्टर्स करने क्यों आए हो, तो हाँ सही बात। उनकी अलग थी, उनकी मोटिवेशन थी कि भाई विदेश में सेटल होना अच्छा। है, पैसे कमाने।
जो कि गलत नहीं है। पर फिर बात ये आती है कि अगर आपको कोई काम करना है जिंदगी भर, तो आपका अगर उसमें हाँ लग रहा है सही बात। क्या फायदा है ना। सही बात और है। आप किसी को मतलब आप प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकते, आप अच्छी सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे अगर आपका खुद हम्म का मन, अच्छा काम भी करना मुश्किल हो जाता है हम्म कई बार। हम्म फिर इसलिए मेरे को ये लगता है कि थोड़ा नौकरी करके या फिर थोड़ा एटलीस्ट कॉलेज में आप हम्म एक्सप्लोर करो। बहुत अलग अलग फील्ड है, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जैसे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हैं। फिर आईओएस डेवलपमेंट हो गया, हम्म, डेटा एनालिसिस है, हाँ मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बहुत बहुत सारी फील्ड अब आ गई हैं कंप्यूटर साइंस में। और अब क्या है, कंप्यूटर साइंस हर इंजीनियरिंग के साथ जुड़ती जा रही है। हम्म अगर आप देखो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस है। तो बिल्कुल। टेस्ला में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। तो हम्म हर फील्ड में अगर आपको कार्स में इंटरेस्ट है तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम्म देख सकते हैं कि भाई उसके लिए कैसे डेवलपमेंट होती है, क्या चाहिए, उन लोगों से आप बात कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने जीआरई दे दिया। अच्छा। आखिरी ईयर में जीआरई देना कंपलसरी है। उस वक्त कंपलसरी था, अब बहुत से कॉलेजेस ने मना कर दिया। तो प्रोसेस ये है कि एज ए एग्जाम वो लोग जीआरई और टोफल का स्कोर यूज हम्म करते हैं, यूएस की यूनिवर्सिटीज। और इसका रीजन मेरे प्रोफेसर ने ये दिया था कि जो यहाँ के यूएस के बच्चे हैं वो जनरली बैचलर्स में उनके अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। मतलब या तो उन्होंने रिसर्च अच्छी से की है बैचलर्स में हम्म ही, हम्म या फिर उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर लिखे हैं, या फिर उन्होंने किसी अच्छी कंपनी के साथ इंटर्नशिप की है, जो कि हम इंडियंस और चाइनीज या फिर आउटसाइड यूएस स्टूडेंट्स के पास जनरली नहीं होता है। तो अब मास्टर्स में जब अप्लाई करते हैं तो यूएस के कैंडिडेट को इवेल्युएट करना और हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म तो इसलिए हमारे लिए, हम लोगों के लिए स्पेशली जीआरई और टोफल का इंतजाम किया है, क्योंकि हम लोग जीआरई टोफल में अच्छे मार्क्स ले आते हैं हम्म कि हम लोग भी बराबर हम्म, तोले। तो जीआरई टोफल, जीआरई दे दिया। जीआरई 5 साल के लिए वैलिड है। तो अच्छा। अब मैंने 2016 में दिया था, तो हम्म वो 2021 तक वैलिड था। और इस बीच में मैं सेम स्कोर यूज कर सकता हूँ कई बार। अच्छा। टोफल का स्कोर 2 साल के लिए वैलिड है। ओ, तो मैंने टोफल उस वक्त नहीं दिया था। हम्म टोफल का मेरा ये था कि जिस टाइम मैं अप्लाई करूंगा उसके पहले दूंगा। हम्म और जीआरई की प्रिपरेशन थोड़ी हार्ड है, क्योंकि उसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों है। उसमें मैथ्स तो इजी है, क्योंकि मैथ्स जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक की है मैं कहूँगा, जैसे हम्म प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब। और लेकिन जो इंग्लिश है उसकी वो काफ़ी हार्ड है। मतलब वोकैबलरी पे फोकस करते हैं वो लोग, ग्रामर पे बहुत फोकस करते हैं। और तो हम लोगों, मतलब जो हम लोग एज अ, हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, नहीं है। तो हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट हो हाँ जाता है। इंग्लिश की बजाय हम लोगों के मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं। हाँ ये था। मैथ्स से फोकस करके इंग्लिश में बस थोड़ा बहुत करके हम्म, आप ले आओ। तो जनरली जिस टाइम मैं दे रहा था उस टाइम पे 340 मार्क्स का होता है जीआरई, और अच्छा। उसमें 320 अबव माना जाता है कि भाई ये अच्छा, मतलब बढ़िया है, इसमें आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। पर मेरे थे 307 नंबर। ओ कोई नहीं। सॉरी, 317। 17, अच्छा अच्छा। हाँ 3 नंबर कम रह गए थे, कोई नहीं। तो अब उस वक्त जिस वक्त दिया तो तब तो लगा कि यार ये क्या है, ये तो 320 से कम आ गए, अब तो क्या होगा। अच्छा, इसमें एक बात और नोट है कि आप जितने लोगों से बात करेंगे ना, सबके अपने व्यूज होंगे, सब हम्म अपनी चीज बताएंगे, उन यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया अपने हिसाब से बताएंगे, हम्म क्या लिखना है, कैसे तैयारी करनी है जाने की, हर कोई अपनी तरीके से बताएगा। हम्म लेकिन किसी को भी नहीं पता है। मैं भी आज जो बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। हम्म, जि, जिस जो तैयारी कर रहा है, जैसे मेरे को उस वक्त लोग बोल रहे थे कि भाई 320 से नीचे आया तो कॉलेज नहीं मिलेगा। ओ, अच्छा। तो मिल गया। सही बात। तो ये जो रूल्स इन्होंने हाँ सेट किए होंगे ये कहीं लिखे नहीं है।
कि 320 से नीचे वालों को नहीं देंगे, मतलब कॉलेज ऐसा नहीं बोलता है। कॉलेज कहता है जीआरई दिया होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने जॉब वॉब शुरू कर दी, वो सब हो गया। और मास्टर्स मैंने 2018 में टोफल दिया मैंने। हम्म। टोफल में 1-2 महीने की तैयारी करके दे दिया। जीआरई को मैंने 4 महीने दिए थे। पर प्रिपरेशन। हाँ, टोफल को मैंने 1-2 महीने नहीं, सॉरी, 1-2 हफ्ते दिए थे। टोफल को ओह मैंने अच्छा। वाह। हम्म। टोफल सिर्फ इंग्लिश बेस्ड है और उसमें 4 हैं, जैसे रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो बी वर्किंग एट अ कॉरपोरेट, मेरी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रूव हो गई। ये सब इम्प्रूव हो गए, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि 1-2 हफ्ते में डाल लेंगे। तो वो 120 का होता है, मैं भूल गया टोफल कितने का होता है। में शायद मेरे 107 आए थे। अच्छा। तो अम, उसके बाद टोफल दे दिया। टोफल के बाद आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कि आपके मार्क्स इतने हैं। आप देखो कि पुरानी अ, उस यूनिवर्सिटी ने कैसे कैसे बच्चे लिए हैं, हम्म। उनकी प्रोफाइल और अपनी प्रोफाइल मैच करके देखो क्या वो सिमिलर है। अगर प्रोफाइल मैच करती है तो आपके लिए वो कॉलेज हो सकता है। हम्म। फिर दूसरे पैरामीटर ये भी आते हैं कि कॉलेज अफोर्डेबल है। बहुत से कॉलेजेस हैं जो महंगे हैं, बहुत से सरकारी हैं यहाँ पे जो सस्ते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में गया तो मेरा सस्ता ही था। और बहुत लोग ये फील करते हैं कि विदेश जाना मुश्किल है और हाँ। बहुत पैसे लग जाते हैं ये वो। तो बात यह है कि हिम्मत की बात है, मैं ये कहूँगा। अगर मेरी टोटल एजुकेशन कॉस्ट जो रही है वो 30 लाख के नीचे नीचे रही है, जिसमें मेरा खाना पीना रहना सब। और ट्यूशन फीस सब हो गया 2 साल का। तो अगर आप 30 लाख देखें तो आईआईएम अहमदाबाद या बैंगलोर की हाँ। फीस 22-23 लाख है पूरे कोर्स की। फिर आप उसमें हॉस्टल चार्जेस लगाएंगे या फिर उस शहर में रहेंगे तो उसका अलग खर्चा होगा। हम्म। और तो मेरे हिसाब से बात तो उतनी ही पड़ जाएगी अगर हाँ। आप आए अहमदाबाद में पढ़ें या फिर यहाँ आके पढ़ें हम्म। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हो गई, यूटीडी हो गई, ये सस्ती है। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सस्ती हैं। जो गवर्नमेंट वाली हैं, स्टेट और गवर्नमेंट वाली, वो सस्ती होंगी। अच्छा। पर यहीं पे मेरे को जैसे नॉर्थ ईस्टर्न से आया था एडमिट, तो नॉर्थ ईस्टर्न की फीस ही सिर्फ 50 लाख थी। और उसके ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ बॉस्टन में है जहाँ मैं आज हूँ। अच्छा। तो अच्छा। ये भगवान का सर्कल है कि मेरे को वापस हाँ। इसी जगह तो यहाँ पे रहना भी महंगा है। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, तो वो कैसे रहते हैं कि जैसे 2 बेडरूम में 6 लोग रह रहे हैं। ओह अच्छा। तो रूम में रह रहे हैं और ड्राइंग रूम और लिविंग रूम में शेयरिंग चल रही है। जो कि एज अ स्टूडेंट आपको करना पड़ता है। आप उससे हम्म। नहीं, मतलब उतनी लेविश लाइफ आप नहीं जी सकते क्योंकि आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है। थोड़ा फ्यूचर अनसर्टेन है, थोड़ा डर लग रहा होता है, मेहनत सही करनी है, बात। वो वाली बात है। तो इसलिए करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो बट मैं जैसे फ्लोरिडा में रहा, तो फ्लोरिडा में सेम रेट पे मैं एक पूरा अपार्टमेंट ले सकता था, जो यहाँ पे रूम शेयरिंग का दिया शेयरिंग जा रहा था। में। तो यहाँ शेयरिंग में जैसे कोई $500 दे रहा है, तो मैं $500 में वहाँ पे पूरा रूम ले सकता हूँ अपना, फ्लोरिडा में। तो जगह जगह का फर्क पड़ जाता है। मेरा दोस्त न्यूयॉर्क से पढ़ा था। वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहा है, उसने भी सेम अमाउंट दिया था, $300-400। शेयरिंग में। पर नहीं, उसका अपना रूम अलग। था। और वो क्योंकि कॉलेज का रूम था, इस वजह से। और मतलब जगह जगह और कॉलेज का अलग अलग अपना हिसाब है, मैं ये कहूँगा। तो आपको उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। हम्म। और यहाँ पे मेहनत इसी को कहूँगा मैं कि जीआरई देना, टोफल देना, उसके बाद कॉलेज ढूंढना सही। और यूजुअली लोग 6 से 8 या 10 एट मैक्स कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि हर कॉलेज की अपनी एप्लीकेशन फीस है, जो कि $100 to $200 होती है। तो मतलब $7,000 से $14,000 होती है।
तो आपका स्टार्टिंग में ही मेरा जीआरई का 14,000 गया, टोफल का 11-12 हजार गया। उसके बाद हर कॉलेज में अप्लाई करने के, कुछ कॉलेज फ्री होते हैं, तो फ्री वाले कॉलेज ढूंढो, उनमें अप्लाई कर ही दो, कुछ मत सोचो। और उसके बाद जो फीस फीस तो टोटल मतलब 50,000 मेरा खर्चा पहले ही हो गया सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस में। ओह, हम्म। जीआरई ये सब लेके, मतलब जीआरई टॉफेल वगैरह। हाँ। तो ये सब मिला के हो गया। अच्छा, तो कॉलेज में आपको जब अप्लाई करोगे तो उसमें आपको जीआरई टोफल का स्कोर, साथ में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने हैं, 2 या 3 होते हैं, और एक आपका खुद का एसओपी कहते हैं उसे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों आना चाहते हो इस कॉलेज में, या फिर आप क्या लेके आओगे इस कॉलेज को। तो जनरली बहुत से लोग, बच्चे ऐसे करते हैं कि किसी कंसल्टेंसी को पकड़ा और कंसल्टेंसी से वो लिखवा लिए हम्म। और उसके बाद यूज करा। पर उसमें मैं ये कहूंगा कि आप कंसल्टेंसी को पैसे दे रहे हो, पर गारंटी वहां नहीं मिलती। हम्म। ये ना लॉयर वाला ही हिसाब है कि लॉयर कहेगा कि हाँ जी हम आपके लिए केस लड़ेंगे, लेकिन अरे चाहे नहीं। जीतो, लॉयर तो फिर भी पैसे लेगा। हाँ, सही बात है सर। तो सिमिलर केस यहाँ पे भी है कि कंसल्टेंसी पैसे तो लेगी आपसे, हम्म। और चाहे तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने हम्म। अ, अपने कुछ फ्रेंड्स पकड़े जिनको जिनकी अच्छी इंग्लिश थी, उनको मैंने वो भेजे लिख के। मैंने उनसे कहा कि ग्रामर देखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये चेक करो। आजकल ऑनलाइन टूल भी आ गए हैं, जैसे हाँ। ग्रामरली वगैरह हाँ। हेल्पफुल हो जाता है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि ग्रामरली इतना वो नहीं है। मतलब हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर के लिए ठीक, पर फिर भी आप जो कहना चाह रहे हो उसको वो सही हम्म। से नहीं। फिर लोग क्या करते हैं, पहले पहले मैं ये कहूंगा कि जब आप एसओपी लिखने बैठो तो अपने पूरा ना मार्गदर्शन करो जिंदगी का, कि क्या क्या किया जिंदगी में। हम्म। तो बच्चे 4-5 पेज का लिखते हैं, मैंने भी यही किया, 4-5 पेज का लिखा। अच्छा। आपके पास एक अम, 4-5 पेज का गत्था है आपकी जिंदगी के बारे में। हम्म। अब आप उसको और छोटा करके 1 पेज पे लाना है आपको। अच्छा। 1 पेज सबसे सही मात्रा है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन जाती है तो कोई भी वहां पे प्रोफेसर या जो भी कमेटी है वो 1 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ेगी। ओ हाँ। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी पढ़ रहा है वो इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, उसे मजा आ रहा है पढ़ने में, आपके सही। बारे में जान, और आप उत्साहित, अपनी उत्साहता दिखाओ उससे कि हम्म। मैं उत्साहित हूँ कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, और मैं क्यों करना चाहता हूँ, और मेरे पास पुराना एक्सपीरियंस क्या है, मेरे को क्यों लेना चाहिए। आप अपने आप, मतलब दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है कि हम्म। दूसरे, आपको बस अपने आप को दिखाना है, अपने आप की, लाइक सेलिंग योरसेल्फ इन वन हम्म। पेज, दैट वुड। तो वो लिखना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस में ऐसा है कि अगर आप काम कर रहे हैं कंपनी में तो मैनेजर्स और हाँ। फेलो कलीग से लिखवा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कॉलेज प्रोफेसर्स को ढूंढिए। इंडिया में जनरली क्या होता है कि अगर आप कॉलेज प्रोफेसर या टीचर्स आते हैं, वो पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, हम्म। कुछ रिसर्च या फिर बच्चों को नहीं जानते हैं वो लोग। हाँ। तो कल को आप अगर प्रोफेसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, तो कई बार वो मना कर देता है कि भाई हम तो जानते हैं। या फिर कई बार वो जानते होते हैं कि भाई ये सब तो चलता रहता है, तो वो बच्चे को कह देते हैं कि ठीक है तुम लिख के ले आओ, हम हम्म। हम्म। एडजस्ट करके हम डाल देंगे। हम्म। तो वो आपको पहले से सेट करना होगा एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले, कि मेरे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने वाले हैं लोग, और मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी है। तो ये करके आप अप्लाई करिए और उसके बाद वेट करिए रिजल्ट का। और एक बात यह है कि आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो जैसे फॉल एडमिट, मतलब फॉल एडमिट यहाँ जैसे अगस्त या सितंबर में जो सेशन शुरू हो रहा है नेक्स्ट ईयर, हम्म। तो उसके लिए आपको अभी अक्टूबर या नवंबर तक सब फाइनल करके एप्लीकेशन भर देनी चाहिए।
मार्च अप्रैल तक आता है, और उसके बाद आप रिजल्ट के बाद आप डिसाइड करते हैं, फिर वीज़ा एप्लीकेशन शुरू करो, या फिर लोन वगैरह का प्रोसेस शुरू करो। उनको दिखाओ कि आपके पास फंड्स हैं इतने कि आप अफोर्ड। तो यही यही प्रोसेस है। वाह सर, आपने बहुत ज्यादा ही डिटेल में बता दिया। आई थिंक गाइस इतने डिटेल में आपने, यार मेरे ख्याल से मैंने भी कहीं नहीं देखा। तो गाइज आई होप ये डिटेल आपको समझ में आई हो कि किस तरीके से। पता है, एक यहाँ पर एक बात मैंने नोटिस किया, आपने आई आई थिंक की होगी, कि सर ने ज्वाइन कर ली थी, जॉब कर रहे थे सर, फिर भी सर का मन था कि करा जाए बाहर। अभी ऐसे सर यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉब कर लेते, ज्वाइन कर रहे होते हैं, मतलब जॉब ज्वाइन कर ली, फिर सोचते हैं कि चलो यार कंफर्ट जोन में आ गए, पैसे तो आ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है ये वो, मगर उससे भी बेहतर हो सकता है, उससे भी बेहतर हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, तरक्की इसी का है कि आपको अगला चुनना है कि आगे क्या करना है आपको जिंदगी हाँ में। सही बात है सर, बिल्कुल। सो सर जैसे कि आप वहां पहुंच गए, आप बता रहे हैं कि आई थिंक 30 लाख के आसपास आपका खर्चा आ गया गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में इतना आ जाता है। और आपने पूरा प्रोसेस तो बता ही दिया। तो सर अब ये बताइए कि जैसे कि लाइक आपकी प्लेसमेंट, जब प्लेसमेंट लगी थी सर कॉलेज से ही माइक्रोसॉफ्ट में। यहाँ पे, अच्छा, तुम आप अंडरग्रेड की बात कर रहे हैं या फिर मास्टर्स की? मास्टर्स की क्योंकि सर। मास्टर्स में यहाँ पे प्लेसमेंट का हिसाब नहीं है। ओह तो यहाँ अच्छा। आना है, और आपको खुद से ही कंपनीज में अप्लाई करना है। अच्छा, कॉलेज आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यहाँ जैसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ कंपनियां क्या करती हैं, कॉलेज फेयर करके एक है चीज, उसमें कंपनियां आती हैं, वो अपने स्टॉल्स लगाती हैं, जैसे प्रगति मैदान में हमारी मेला में लगता है। ऐसे ही मेला लगता है। और आप वहाँ जाइए अपना रेज्यूमे लेके, और एक एक कंपनी को दे के आइए, ये मेरा रेज्यूमे है, उसको वो फाड़ के फेंक देंगे उसी वक्त। और आ, पर उन कंपनी फेयर्स में ना हमारे लायक, मतलब क्योंकि वो ज्यादातर इंटरनेशनल्स को नहीं लेती हैं, और हर कॉलेज का ना अलग अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा सरकारी है, और इसका कॉलेज फेयर इतना अच्छा नहीं था। प्लस हम पेंडेमिक में भी थे, तो कंपनी आके स्टॉल लगाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। बट कुछ और कंपनीज हैं, मतलब कुछ और कॉलेजेस हैं, जैसे कैलिफोर्निया साइड अगर आप लेते हैं, तो वहाँ पे गूगल वगैरह सब स्टॉल लगाते हैं अपना। और इन स्टॉल से आप बस रिक्रूटर से मिल सकते हैं, और रिक्रूटर की आईडी लेके उससे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अप्लाई फिर भी करना पड़ेगा जॉब ओपनिंग्स में। आपको अपना रेज्यूमे, और जब आप अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना किस्मत का खेल है, मैं ये कहूँगा। उसमें आपका कुछ नहीं कर सकते, आप बस रेज्यूमे आप अपना अच्छा बना सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं। उसमें रेलेवेंट स्किल जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आप पढ़ो, उसके हिसाब से आप लिखो, और उसमें आप डाल दो। उसके बाद कॉल आना भगवान के हाथ में। सही बात है। तो ऐसे करके आपको अप्लाई करना है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में 120 से ज्यादा पोजीशंस पे अप्लाई किया था, ओह और तेरी इतनी। कुछ कॉल आई थी। अरे। अच्छा। अमेजोन में मैंने भी ऐसे 90, मैंने बहुत बड़ी स्प्रेडशीट बना रखी थी उस वक्त, हम्म। किस कंपनी में मैंने अप्लाई किया है, और उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ जॉब आईडी लिखी हुई थी। अमेजन में कुछ 90 हुई थी, और उसमें से 2 कॉल आई। और एक्सपीडिया में मैंने 5 में किया था, और उसमें 1 कॉल आई। तो ऐसे अलग अलग कंपनी का लिख रखा था। ब्लैक रॉक से कॉल आई। अम, तो कॉल आना स्टार्टिंग में मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसे क्लोज टू ग्रेजुएशन गया, हम्म। कॉल्स आनी काफी हो गई थी। हम्म। और उस वक्त पेंडेमिक से भी बाहर आ रहे थे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं। हम्म। तो बट हाँ, लकीली मेरे को उस वक्त कॉल आ गई, और मेरे को 3 कंपनियों में सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद मेरा ये था कि किस कंपनी में ज्यादा अच्छा मैं आ, हाँ। मिल रहा है। पैकेज पैकेज नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने पैकेज पे ध्यान नहीं दिया, मैंने टीम और टीम के काम पे ध्यान दिया तीनों कंपनियों में। और क्योंकि मेरा जो टीसीएस और O9 में वर्क एक्स हो गया था, वो थोड़ा डेटा एनालिटिक्स साइड हो गया था।
तो वो मैं नहीं चाहता था, मेरे को वेब डेवलपमेंट ही करना था। एक्सपीडिया में थोड़ा वेब डेवलपमेंट था, लेकिन उनकी टीम बहुत बड़ी थी, तो बड़े समुद्र में छोटी मछली खो जाती है। सही बात है सर। उतना नहीं तो सीखने को मिलता था। हाँ, और फिर एक आईटेंशल करके एक कंपनी थी, छोटी कंपनी है, उससे आया था। उनकी टीम छोटी थी, लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट था वो लोग डेमोज देते थे, तो डेमोज बनाने का काम था। और डेमोज बनाने के काम में मैंने ये देखा है कि बहुत ना वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि जब कोई क्लाइंट को डेमो देना है और उसके पहले आप 2-3 दिन पहले तक बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स, और भाई रात रात भर काम हो रहा है कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, कल डेमो है, परसों डेमो है। सही बात है सर। तो वो मेरे को लगा कि नहीं यार, वो नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की टीम अच्छी थी, वेब डेवलपमेंट में था। और मैंने बस इनसे एक चीज पूछी, कस्टमर इंटरेक्शन तो नहीं है ना, और वर्क लाइफ बैलेंस है ना? तो अच्छा। इन्होंने दोनों चीजें सब। सही है। हमारा हमारा डायरेक्ट हम कस्टमर से बात नहीं करते, और वर्क लाइफ बैलेंस भी है। मैंने कहा बट ठीक है। हमारे सही। तो जैसे कि सर आपने जैसे कि यहाँ पर इतने सारे इंटरव्यू हुए थे, तो थोड़ा राउंड्स बता दीजिए कि इंटरव्यू राउंड्स किस हिसाब से हुए थे माइक्रोसॉफ्ट में, क्या क्या पूछा गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट का हर कंपनी का अपना अलग राउंड्स का रहता है। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा है कि पहले स्क्रीनिंग राउंड होगा, जो कि आधे घंटे या 45 मिनट्स का होता है, और यूजुअली आधे घंटे का होता है। उसमें बस आपको कोई फोन करेगा और आपके बारे में जानेगा कि आप, वो बस ये गेस कर रहे होते हैं कि आप वाकई में जो आपने रेज्यूमे लिखा है वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आप रियल बंदे हो या नहीं, मोस्टली। और उसके बाद वो, यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, यहाँ पे बस एक्सपीरियंस देखा जाता है और ओहो। क्रॉस चेक कि रेज्यूमे में जो लिखा है और वहाँ जो लिखा है वो सही है। अच्छा। के बाद 4 राउंड्स होते हैं, इसको सुपर डे कहते हैं। तो सुपर डे में सेम डे 4 राउंड होंगे, अच्छा। 45 1 आवर के। और मेरा वर्चुअल हुआ था, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम था। लेकिन उस वक्त उसके पहले हमेशा से और अभी भी ऑप्शन ये है कि आप फिजिकली आप आ सकते हो। और आपको अ, तो अगर आप यूएस में कहीं पे भी हो, कंपनी जो इंटरव्यू ले रही है वो आपकी फ्लाइट और होटल का टिकट करा के देगी। यहाँ पे ऐसा, मैं आपको खाना भी मिलेगा, आपका फ्लाइट टिकट्स वगैरह का भी मिलेगा। और आप आओ। तो इस वजह से पहले ये होता था कि कंपनीज जो जैसे सिएटल में है, वो दूसरी स्टेट को नहीं करेंगी क्योंकि खर्चा आएगा, तो वो आसपास ही पहले ढूंढती थी। ओ। बट क्योंकि ये वर्चुअल राउंड हो रहे हैं और पेंडेमिक का टाइम है, तो इसलिए ये लोग, इन्होंने अपना ब्रॉड कर लिया कि ठीक है, हम टेक्सास से भी करेंगे, कहीं से भी कर लो क्योंकि वर्चुअल है। हाँ। तो आई थिंक वर्चुअल अभी थोड़े टाइम तक रहेगा। और तो वर्चुअली आपका राउंड हुआ 4, जिसमें एक राउंड मेरा जो पहला था वो टेक्निकल था, जिसमें आप लीड कोड तो आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल। कोड से या गीक्स फॉर गीक से आप अगर प्रिपरेशन करेंगे या हैकर रैंक से, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इजी या हार्ड या मीडियम। इजी या मीडियम, हार्ड हार्ड जनरली नहीं पूछते हैं। पर कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड जो है आप उनको रट सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बेसिकली वो आपका देखना चाह रहे हैं कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पता है, सही से यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और उनको भी ये बात पता है कि अब लीड कोड वगैरह सब रट के आ जाते हैं वगैरह। हाँ। ये बात पता है। तो आपको ऐसे में स्टैंड आउट कैसे करना है वो आपको दिखाना है। तो जनरली जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो सिर्फ लीड कोड पे फोकस करते थे। तो अब लीड कोड आप कर लोगे, लीड कोड तो सब कर रहे हैं। सही बात। तो मैंने, और कॉलेज वर्क भी कर रहे हैं, कॉलेज में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी कर रहे हैं, विच इज फाइन। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा गया, मैंने अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए, रिएक्ट नोड जेएस पे। मैंने उनको गिटहब पे डाला, लाइव किया। अगर आप अभी भी गिटहब पे जाएंगे मेरे, तो 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। वाह। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और उस वक्त मैं थोड़ा सीख भी रहा था, तो ऐसे
खराब कोडिंग स्टाइल है, हम्म, उनको फॉलो मत करिएगा कोडिंग स्टाइल के लिए, बट एज है अ प्रोजेक्ट। मतलब ये मतलब आप एक प्लस पॉइंट बता रहे हैं कि गाइस ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट से आपको लर्निंग होगी, आपको क्लियर होगा कि ये आपके लिए फील्ड है या नहीं है। हम्म, और उसके बाद आप उन प्रोजेक्ट्स की बात करो जब रेज्यूमे होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूँ मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल, मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स की बात कर सकता हूँ। अगर मैं 2 साल से पहले की वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ तो वो सुनेगा, वो मना नहीं करेगा। लेकिन मेरी भी थोड़ी याददाश्त कमजोर हो चुकी है कि 3 साल पहले क्या किया था। हम्म, जैसे मेरे से एक इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि 5 साल पहले आपने इंडेक्स बनाए थे सीक्वल टेबल पे। हाँ। मैंने कहा, कह रहे कि क्लस्टर्ड वर्सेस नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा यार वो तो नहीं पता। तो उसने मेरे मुंह पे कह दिया कि जो चीज तुम्हें नहीं पता वो रेज्यूमे में मत लिखो। हम्म, हम्म, तो जो कि सच बात भी है, क्योंकि सही बात पांच है। साल में आपके याददाश्त हो गई है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो कॉलेज का 2 साल है उस वक्त काफी ब्रेक आ गया आपके काम में। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप 6 महीने ना करें तो आप बहुत चीजें भूल जाएंगे। भूल जाऊंगा, प्लस हाँ। नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, नए हाँ, नए अनाउंसमेंट अपडेट्स इतनी। आते रहते हैं, हाँ। आप तब तक दो हो सकता है, दो नए वर्जन ऑफ एंड्रॉयड आ जाएं और आप कहें हाँ। अरे सही बात है। ये कैसे करते हैं, इसमें स्क्रीन एक्सेस कैसे मिलेगा। तो और अपने आप को अपडेट भी रखना है उस चीज से, न्यूज से, है ना। तो प्रोजेक्ट्स बनाना इसलिए काफी अच्छा जरूरी कहूंगा है। मैं, और इस वजह से स्टैंड आउट हुआ। तो मेरा सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड दोनों मेरे प्रोजेक्ट्स पे हुआ। सेकेंड राउंड में मेरा प्रोजेक्ट उन्होंने देखा, उन्होंने उससे ही क्वेश्चन पूछे, उसका कोड देखा, हम लोगों ने मिलके बात की कि ये कोड क्यों खराब है या क्यों अच्छा है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड में वो बहुत इंप्रेस हो गया और उसने कहा कि आई थिंक यू विल गेट इट। ओह उसने वाह। second कह दिया, उसने कहा कि द एक्सपीरियंस विच वी आर लुकिंग, यू आई थिंक यू हैव इट एंड आई थिंक यू विल गेट इट। तो मैं काफी उसके बाद हाँ, फील हो जाता है। सही पर बात मैंने है। उसको काम किया कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होता। उस वक्त नहीं होता, हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ। थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछा, अच्छा। कैशिंग को लेके, कि कैशिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। जो कि मेरे को बाद में पता चला कि मेरी मैनेजर थी वो जिसने इंटरव्यू लिया था थर्ड राउंड, और उन्होंने वो एक्चुअल लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस की थी। और मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो क्वाइट क्लोज टू वही सॉल्यूशन है जो उन्होंने आज इम्प्लीमेंट कर रखा है। वाओ। मैंने कहा कि हमें पसंद आया क्योंकि तुम्हें वो चीज नहीं पता हो सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने वो सॉल्यूशन दिया जो हमने किया। तो विच इज क्वाइट क्लोज, मतलब थोड़ा बहुत तुम्हारा सॉल्यूशन अलग था बट स्टिल काफी क्लोज हमने किया हुआ है। तो उससे वो काफी इम्प्रेस हो गई। अम, फिर फोर्थ राउंड मेरा अम, मेरे वीपी के साथ हुआ था। वीपी और मतलब वाइस वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, अच्छा अच्छा, हाँ। तो उन नहीं नहीं नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के साथ नहीं, सॉरी। स्किप मैनेजर होता है एक, जो कि मैनेजर के ऊपर होता है, स्किप मैनेजर के साथ हुआ था। तो वो बहुत मतलब इज इन फिफ्टीज एंड का 22 साल 23 25 साल का एक्सपीरियंस है। ओह। तो उन्होंने मेरे से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जो कि अच्छा। बहुत जरूरी थे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कैसे काम करता है बताओ। मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं था। पर अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे आपकी मास्टर्स या फिर बैचलर्स काम आएगी। कुछ नहीं। मास्टर्स बैचलर्स दोनों में कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है। हम्म। कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर आपने अच्छे से किया है तो वो जवाब देंगे। और मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स मैंने अच्छे से किया था। हाँ, सही है। तो भगवान ने सब सेटिंग बिठाई। हाँ, सही बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है अब बताएंगे आपको हम। मैंने कहा आप ब्राउजर पे जाते हैं, वहां पे google.com लिखते हैं, वो google.com की रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस पे। डीएनएस के बीच में रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद आईपी एड्रेस मिलता है, वो आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड होता है कहीं पे, वो आईपी एड्रेस उस नेम स्पेस पे जाता है, ऐसे करके उसको पूरा डायग्राम बना के अच्छे से बता। कह रहे
इतने अच्छे से मेरे को किसी ने नहीं समझाया। ओह अच्छा, अरे वाह। बट ये तो बहुत बेसिक चीज है। कह रहा है यस। और तुम विश्वास नहीं करोगे कि लोग वेब डेवलपमेंट में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि होता क्या है हम्म। पीछे। जब आप सही बात। google.com तो होता क्या है। और मैं यहाँ पे सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पे रिसर्च करिए कि जब आप google.com या facebook.com लिखते हैं, आपको विद लेस देन 1 सेकेंड में आपको रिजल्ट दिख जाता है। हम्म, हम्म, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीजें हो रही हैं और वो कितनी स्पीड से हो रही हैं, ये अमेजिंग है। आपका google.com का रिजल्ट दुनिया के किसी और कोने से आपको विद इन लेस देन सेकेंड मिल जा रहा है। हम्म, ये बहुत एक अमेजिंग चीज है जो कि जी इंसान ने सही बात है, बना। सही बात है। और इसके पीछे बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत ज्यादा प्लानिंग लगी है, हम्म, सालों की लोगों की मेहनत है। बट हम्म, अब हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं। मैंने देखा जैसे मेरे फादर ही हैं, या कोई फ्रेंड google.com लिखेगा और थोड़ा सा स्लो हुआ, क्या यार स्लो है। पता है कितनी चीजें हो रही हैं इसके। सही बात। तो वो भी अच्छा है। मतलब ऐसे अगर आप खुद से पढ़ते रहो तो अच्छा लगता है कि अपडेटेड रहते हो, आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो यही राउंड होते हैं, 4 राउंड, और उसके बाद ऑफर आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये पैटर्न है। और आप अगर अमेजोन की बात करेंगे तो अमेजोन में एक राउंड होता है। पहले हाफ एन पहले पहले उनका आता है ऑनलाइन असेसमेंट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट में ऑनलाइन असेसमेंट नहीं हुआ था, नहीं, होता अच्छा, वो टेलीफोनिक कर लेते हैं ऐसा कुछ, हाँ। ये करके। हाँ, विच इज आई फील मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट आज की डेट में हर कोई दे रहा है। हाँ। और 1 घंटा 2 घंटा देके किसी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराना काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नहीं है। इससे अच्छा आप उससे बात करो, उसकी सोच जानो कि वो कैसे करे। सही बात। वो जान रहे हैं, मतलब उसको पहले क्या थॉट आ रहे हैं, कैसे थॉट आ रहे हैं, क्या वो सोच पा रहा है या कुछ भी प्रोग्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वो आई थिंक वो ज्यादा फ्रूटफुल है। बट ऑनलाइन असेसमेंट, अगर आपके वॉल्यूम ज्यादा है एप्लीकेशन में, मतलब एक पोजीशन के लिए आपको 10,000 एप्लीकेशन आ गई हैं, तो हम्म, आप कैसे तो हम्म, ऑनलाइन असेसमेंट एक वो हो जाता है कि ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट से छांट दो, उसके बाद जो आएंगे उनको देखेंगे। तो इसमें अमेजोन में पहले ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसके बाद आधे घंटे का राउंड होता है। ये न्यू ग्रेड पोजीशन के लिए है। न्यू ग्रेड मतलब जो डायरेक्ट कॉलेज से आ रहा है। अच्छा, हम अब इवन दो हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग स्टिल न्यू ग्रेड में अप्लाई कर गए। सकते हैं। चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो, न्यू ग्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास ये एज है क्योंकि मैं पहले जॉब कर चुका था, तो मैं एक्सपीरियंस्ड वाली जॉब्स में भी अप्लाई कर पा रहा था। हालांकि जो डायरेक्ट बैचलर से करते हैं आते हैं मास्टर्स करने, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो न्यू ग्रेड में ही कर सकते और अमेजन न्यू ग्रेड में वो आधे घंटे 1 घंटे के इंटरव्यू में सिलेक्शन कर लेता है। और गूगल का अच्छे राउंड होते हैं, गूगल के भी क्वाइट सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट है। सुपर डे होता है उनका उनका ऑनलाइन असेसमेंट भी आता है, स्क्रीनिंग भी होती है। हैं। और गूगल के मल्टीपल फेजेस होते हैं, पहले ऑनलाइन असेसमेंट, फिर उसके बाद आपका स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद सुपर डे, 3 4 इंटरव्यू में। तो मोस्ट बिग कंपनीज यही करती हैं कि अगर आप सुपर डे तक पहुंच गए हो, देन यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। क्योंकि कोई भी अपने टीम के 4 घंटे, मतलब हर हाँ। इंडिविजुअल एम्प्लॉय के 1 1 घंटा वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो और उस वक्त आप कंट्रोल में हो, मतलब आपके ऊपर है, आपके पास 4 चांसेस हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। चार चार मतलब 4 साल। चार अलग अलग लोगों से आपको करना है, तो 4 बार आप अपना अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। और अगर आपने 4 में इतना भी कर दिया ना कि अच्छे एज अ टीम मेंबर आप साबित हो गए, या फिर हंसमुख साबित हो गए, तो भी बहुत बार टीम्स प्रेफर कर लेती हैं कि ठीक है, बच्चा है, सीख जाएगा। अरे ले वाह। ले। एक सर, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि आप जानते हो, अभी इंडिया का आपको पता हो कि भैया डीएसए के पीछे मतलब हाथ धो के सब लोग पड़ गए कि डीएसए कर लो तभी जॉब लग सकती है, मैंग में, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट में। वहां पे आप कह रहे हैं कि इतना नहीं है। वहां पर जैसे आप बता रहे हैं कि टीम मेंबर हो, लाइक हंसमुख हो, ऐसा।
तो देखो, ये कहना ना बड़ा मुश्किल है। डीएसए करना इज काइंड ऑफ बेसिक। और अब बहुत, और ये टीम पे डिपेंड है। अगर आप न्यू ग्रेड पोजीशन या कॉलेज लेवल वाली पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे सिर्फ आपको डीएसए से ही जज करेंगे। उसमें आपको टीम मेंबर या ऐसे नहीं जज करेंगे। तो बेसिक आपको डीएसए करना ही पड़ेगा। और अगर किसी का ऑनलाइन असेसमेंट आ रहा है, जैसे अमेजन का आएगा या नेटफ्लिक्स का आएगा, तो आप उसमें डीएसए से ही आप कर पाओगे। और तो आप कुछ नहीं कर सकते। और प्लस बेसिक ऊपर बेसिक, हाँ। पहला राउंड जैसे मेरा जो हुआ था लीड कोड पे, उसमें मोर देन क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो उसमें इंटरेस्टेड था कि अच्छा ठीक है, अगर इसकी जगह ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा तो क्या होगा। सो डीएसए इज इम्पोर्टेंट। पर अगर आप बिल्कुल ब्लैंकली आंसर दे जा रहे हो, हंसमुख नहीं हो, डिस्कशन नहीं कर रहे हो। हाँ। डिस्कशन बहुत जरूरी है। जब इस इंटरव्यूज में ये लोग ये देखते हैं कि क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या आप कोलैबोरेट करके चीज कर पा रहे हो। वो सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा, वो आपको एज अ पर्सन भी जानने की कोशिश कर रहा है। और आप इस जितना अपने आप को दिखा सकते हो कि भाई मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ, हम्म। मैं हम्म। कॉलीग बहुत अच्छा हूँ, मैं इंटरेस्टिंग हूँ, अम, हम्म। और मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज के बिना तो नहीं होगा, देखो। ठीक है, बट टीम मेंबर अगर आप दिखाओगे तो वो भी एज है आपके पास। और वो बेसिक नॉलेज पे फोकस कर लेते हैं, जैसे इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सब तो हम्म। बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर है। लक है वो, अगर टीम आपसे डीएसए पे फोकस कर रही है तो डीएसए। ओके। तो सर अब ये बताइए कि आपने इंटरव्यू प्रोसेस बता दिया, सब कुछ बताया, अब ये बताइए कि ये क्या सीन है, सैलरी का क्या वहां पर सीन है, ये बता सकते हैं सर? सैलरी बता सकते हैं। तो सैलरी काफी वेरिएबल रहती है यहाँ पे। अम, तो इंडिया में क्या है कि बैंगलोर नोएडा में भी वेरिएशन है, अगर आप हम्म। देखेंगे हम्म। सैलरी। है। हालांकि वो हमें इतना फील नहीं होता क्योंकि वो बहुत माइनर सा है। हम्म। प्लस लिविंग कॉस्ट भी दोनों की डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स दिल्ली और बैंगलोर में ही है। हैदराबाद में भी है, पुणे में भी है। है। हाँ, बट काइंड ऑफ उनमें जो वेरिएशन है पैकेजेस में, वो काइंड ऑफ नेग्लिजिबल है। हम्म। पर यहाँ पे क्योंकि लिविंग कॉस्ट हर स्टेट हर सिटी की बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 500 हम्म। में आप ले सकते हो, और हम्म। फ्लोरिडा में फ्लोरिडा। 500 हम्म। अपना घर। हम्म। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पैकेज आपकी लोकेशन के बेस्ड है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहर हैं, मतलब कैलिफोर्निया स्टेट, उसमें लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि आपको कार रखनी है, आपको टैक्सेस ज़्यादा देने हैं। ओ। वहाँ पे चीज़ें भी महंगी हैं। हम्म। और मेरे को पर्सनली कैलिफोर्निया इतना लुभाता नहीं है। लोग कहते हैं सैन फ्रांसिस्को वगैरह लोगों की ड्रीम होती है। हाँ। पर जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो सेम पैकेज जितना मेरा है उतना ही पैकेज पे वहाँ पे। और अच्छा। मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं ये कहूंगा। मैं घर में जी रहा हूँ और ज्यादा घूम फिर सकता हूँ। सही बात। वो वो अभी भी बेसिक हम्म। स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डिफरेंस पड़ जाता है। हम्म। और बड़ी कंपनीज जो हैं वो 6 फिगर में दे देंगी आपको। अच्छा, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। हम्म। तो स्टार्टिंग 119 से हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट में, 120, मतलब 1 लाख डॉलर। डॉलर। और अब लोग जनरली इसको कैसे करते हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं आईएनआर में कि इतने मिल हाँ। रहे हैं। हाँ। नॉट द राइट वे, क्योंकि देखो यहाँ पे रेंट भी ज्यादा है। जैसे मैंने बताया, 500 हम्म। में शेयरिंग हम्म। मिलेगा, तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप फिर आप शेयरिंग भी लेना नहीं पसंद करोगे ना। नहीं। अब आप तो पूरा घर लोगे तो यहाँ पे 1500 $2000 का एक कमरा मिल जाएगा। अब 1500 2000 एक कमरा मिला तो मतलब $2000 कितने हो गए? 80 के हिसाब से अब 1,60,000 हो गए। हाँ। नहीं, कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। 1,60,000 ही हो गए। ओके।
हाँ, 1,65,000 के आसपास, हाँ। हाँ जी। इतना रेंट। एक रेंट है। अम, मतलब 2 बेडरूम हाउस में एक कमरे का रेंट है। तो आप घर शेयर कर रहे हो किसी के साथ, लेकिन इतना दे रहे हो, तो हाँ, कन्वर्ट अगर आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। कन्वर्ट आप करके अपना लोन चुका सकते हो, लेकिन यहाँ की लिविंग कॉस्ट भी हाई है। आप किस शहर में रह रहे हो उसके हिसाब से आपको देखना है। फिर आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी का अलग खर्चा है। कोई गाड़ी लेता है, कोई नहीं लेता है। जैसे इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, मेट्रो वेट्रो है, तो मैं मेट्रो यूज करता हूँ। पर गाड़ी लेनी है तो उसका अलग खर्चा है, पार्किंग के पैसे देने हैं। तो वो सारी कॉस्ट ज्यादा हो जाती हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा है कि भाई 1 लाख फुल। यूएस पैकेज लगे थे, तो मेरे को याद है कि एक किसी का अम, हैदराबाद के हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल आया था कि इस बच्ची की नौकरी गूगल में लगी है, 1 करोड़ का पैकेज। हाँ। मैंने कहा यहाँ पे सबकी अमेजन गूगल जिनमें भी लग रही है, सबके 1 करोड़ से ऊपर है। कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। यहाँ आपका 70 से 80 लाख का खर्चा है साल का, तो 1 करोड़ का क्या करोगे आप? सही बात है। जब आप 1.5 लाख 2 लाख घर में दे रहे हो रेंट हर महीने, 24 लाख तो आपके रेंट के हो गए साल के। खाना पीना तो अलग से, आना अलग जाना। से घूमो फिरो, इंडिया की फ्लाइट्स। तो कन्वर्ट करना इसलिए बंद करना पड़ेगा एज सुन एज आप यहाँ आ जाओ। कन्वर्ट करना बंद कर दो। और सैलरी पैकेज अगर मैं कंपैरिजन में कहूँगा कि लिविंग कॉस्ट और ये, तो जो मैंग्स हैं, ये बड़ी कंपनीज हैं, इनके पैकेजेस जनरली अच्छे होते हैं और आप अबव एवरेज लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो। अम, मतलब जो सेम आपका बैंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहा है, सेम लाइफस्टाइल आप यहाँ अफोर्ड करोगे। देयर विल बी नो मच डिफरेंस, टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब इंडिया में अगर माइक्रोसॉफ्ट में आज की डेट में स्टार्टिंग पैकेज 15 या 16 लाख है, तो वो कंपैरेटिवली यहाँ पे आप मान लो कि, खर्चा वर्चा सब मिला के ऐसा कुछ। तो आप सेम लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो। ओ, लाइफस्टाइल से मतलब आप यहाँ मेड नहीं रख सकते फिर भी। अच्छा। तो मतलब आप इंडिपेंडेंट घर में रह सकते हो या गाड़ी ले सकते हो। जैसे सेम आई थिंक अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्ट करता है 15 16 के पैकेज पे, तो वो पहले साल में आई गेस गाड़ी ले सकता है और एक सिंगल हाँ, बेडरूम थोड़े बड़े रेंट में रह सकता है। हाँ। सेम मैं ये कहूँगा। और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर्स जाननी है तो यूजुअली 70 से 80 थाउजेंड डॉलर्स का एवरेज पैकेज मैं कहूँगा होता है। बड़ी कंपनीज ये वाली थोड़ा ज़्यादा देती हैं क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप वगैरह भी दे रही हैं। बट जितना आप ज़्यादा दे रहे हो उतना आप ज़्यादा टैक्स भी दे रहे हो, ये भी ध्यान रखना। टैक्स यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। मैं 35% टैक्स देता हूँ। ओ, अच्छा। मेरा जो भी पैकेज है वो 35% तो ऐसे ही हटा दो कि अरे ये तो, भाई, तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ, तो टैक्स बहुत ज्यादा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। मतलब आपको हाँ। देख आज की डेट में मेरे जो फ्रेंड्स इंडिया में काम कर रहे हैं, वो उनके पास 2 2 गाड़ियां और एक घर हो चुका है। और मैं अभी भी यहाँ पे पहली गाड़ी मतलब हाँ। अ, और सेम लाइफस्टाइल। हाँ, मतलब मैं ये कहूंगा कि वो भी रेंट पे रह रहे हैं अभी। मतलब कुछ लोग, मैं भी रेंट पे और सिंगल बेडरूम में आ गए हैं, लेकिन हाँ उनके पास गाड़ियां अच्छी हैं और वो ज्यादा घूम कर रहे हैं। उनके पास मेड, मतलब वो घर पे उन्होंने हाँ, मेड वेड कुक वगैरह भी हैं उनके पास। मेरे पास वो नहीं है। तो आपको देखना है, पर यहाँ पे घूमना फिरना अच्छा है, थोड़ा हरियाली है, पॉल्यूशन कम है। तो आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो। सही बात। तो सर, अब आई थिंक ओवरऑल हमें सब समझ में आ गया। अगर हम यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं यूएसए में, तो हमें वो भी समझ में आ गया। आपने एक एक स्टेप बता दिया, जीआरई, टॉफिल, और फिर किस तरीके से अप्लाई करना है। देन अगर हम जॉब ले रहे हैं, कितने इंटरव्यू राउंड्स होंगे, क्या सैलरी मिलेगा और क्या हकीकत है, बहुत से लोग ये नहीं बताते। तो वो भी जान लिया। अब ये बताइए सर कि ओवरऑल अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें मेरे व्यूअर्स को, तो किस तरीके से देंगे?
तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं और अगर आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं अभी बैचलर्स के, तो आपने पहले 2 साल एंजॉय करा है तो बहुत अच्छा है। अब आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स में और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, अपना थोड़ा थोड़ा लर्निंग शुरू करो, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ कोई भी आइडिया बनाओ, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बेकार यूजलेस ऐप भी बना दो एंड्रॉइड से, हम्म, वेब डेवलपमेंट से। बस आप प्रोजेक्ट बनाओ, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। अगर ये नहीं करना है तो फोर्थ ईयर में आपके पास टाइम है डिसाइड करने का कि आप अभी एमबीए करना चाहते हो या नहीं, या फिर आप किस टाइप की जॉब चाहते हो। ये कंप्यूटर साइंस के लिए। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में और आप सोच रहे हो बाहर जाना है, तो मैं कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस चेक करो। अगर आप 2 से 3 साल 4 साल एट मैक्स एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आना काफ़ी अच्छा है, मतलब विद कनाडा या यूएस जहाँ भी आपका मन है, क्योंकि देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपना करियर स्क्रैच से स्टार्ट करो इन कंट्रीज में। मेरे को यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। मेरा पुराना एक्सपीरियंस उन्होंने काउंट ओके ओके किया, ठीक है, बट स्टिल लाइक मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 बनने में 1 साल लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें इंजीनियर 1 लेंगे बिकॉज यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़े। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो 8 साल एक्सपीरियंस था इंडिया में, ओह। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 मिला। ओह। एंड सब सरप्राइज थे, और उस वो भी सरप्राइज था, बट सही बात है। हाँ ठीक है, आपको करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप 7 8 साल एक्सपीरियंस वगैरह है, तो मैं कहूँगा कि इंडिया इज नॉट इट, इंडिया इज ग्रोइंग मार्केट, बहुत ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, और पैकेजेस इंडिया में भी अच्छे हैं, और आप परिवार के पास हो वहाँ पे, आपको अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ भी अफोर्ड कर सकते हो। मतलब मैं ये कहूँगा कि आप अपना करियर देख लो, अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना ओके है। मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको करना पड़ेगा, बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट, कि अगर आपको करना पड़ा तो यू शुड बी फाइन, वैसी वाली बात है। और यही एडवाइस दूंगा, और कहूंगा कि हर कोई हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सबको बस कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। इंसान की बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस सही दुनिया बात में, प्रॉब्लम्स हैं। अगर है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कोई प्रोसेस आसान बना रही है, तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है सर। और गाइज यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सर की अगर जर्नी आप देखो तो पता है, यहाँ पर मैंने देखा है सर, मोस्टली ऐसे मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ। तो वहां पर क्या होता है ना कि मतलब बैचलर करी हम लोगों ने, हमें जॉब मिल गई। जॉब मिल गई तो भैया बस उतना ही है, मतलब बहुत है हम लोगों के लिए। बट सर ने जॉब भी करा था, उसके बाद भी आगे की सोच रखी यार, कि हिम्मत जो है ना, कि हाँ एक नियत रखी मेरे को, इससे आगे भी मेरे को करना है और इससे बेहतर भी हो सकता है। फिर सर ने जीआरई दिया, टॉफिल एग्जाम दिया, फिर कॉलेज में वहां पे स्टडी करे, अब माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छी जगह पर हैं, जहां पर आज के इंडिया में ऐसे लाखों स्टूडेंट होंगे या करोड़ों स्टूडेंट होंगे जो कि सोच रहे होंगे यार कि मेरे को भी जॉब मिल जाए, मैं भी एक ऐसी लाइफस्टाइल स्पेंड करूँ यूएसए में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय निकाल के आए, थैंक यू सो मच। So hey guys, welcome back to another interesting podcast. Today we have सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर यार आईआईटी दिल्ली से हैं, और इनकी जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे, एंड देन अभी फेसबुक में जॉब कर रहे हैं, तो फेसबुक यूएस में। तो इनकी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा बता रहे हैं कंप्लीट रोड मैप आप लोगों को, कि अगर आपको फेसबुक ज्वाइन करना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो क्या स्टेप्स हैं आपके लिए। क्या खाली आईआईटीएन ही कर सकते हैं, नॉन जो टायर 3 या नॉर्मल कॉलेज से क्या वो बंदे नहीं जॉब कर सकते। इस सवाल का जवाब हम इस पॉडकास्ट में जान रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि फेसबुक ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आई कैन से कि अगर आप ये पॉडकास्ट देखते हो तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे फेसबुक ज्वाइन करने के लिए। पूरा कंप्लीट रिसोर्सेज एंड रोड मैप आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, तो बने रहो इस वीडियो में। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। And welcome Siddharth sir, thank you for coming. Please, over to you sir. Hey Samir, thanks for having me. Yeah, so as Samir said, my name is Siddharth.
I graduated from IIT Delhi in 2013, and I immediately got a job in US with an on-campus placement. So since then, I've been in the software engineer industry for 9 years. Right now, I'm in Facebook for the last 2 years. Before this, I was in Microsoft Redmond for like 6 years. So yeah, the entirety of my career has been in US. So a lot of my answers would be US specific. मुझे exactly idea है नहीं अभी इंडिया में industry. मतलब there are some resources which I'll say here which will be US specific. I'm sure India में भी it's a good scene because a lot of my friends जिन्होंने graduate किए थे वो भी इंडिया में हैं and they are doing pretty well for themselves too. तो सर फर्स्ट क्वेश्चन वही निकल के आता है, सपोज अभी मैं लाइक स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो मैं को जॉब ज्वाइन करना है फेसबुक, तो मेरे लिए क्या स्टेप रह सकता है, पहले मुझे क्या करना चाहिए? Yeah, so Samir, to answer your question, first of all, one thing I want to mention to your readers, listeners, is Facebook is unique from some of the other big tech companies in one way, in that Facebook does not have an India office, right? So if you want to go to Microsoft, Google, Amazon, you can join their India office and eventually either go to their US office or just be their India office is good enough. Facebook, on the other hand, does not have a India engineering office. Sorry, they do have a sales office, but I'm talking of engineering, and there is no way to do. Okay, so to get to Facebook, either you already have to be in US or there's UK, Singapore, all those two, or yeah, like you can get recruited directly from India if you're in IIT or something, or the most common way, and I'll actually take this as a separate question. I'll take this into two questions. One is like, how can you join a big tech company, right? Whether in India or US, if you're say not from a tier 1 college or tier, and secondly, like let's say you're sitting in India, how can you come to US, right? Yeah, sure. Let's start with the latter one. How can you come to US if you're sitting in India? So obviously for some people like me, the journey was very different than a lot of people because, like as you said, I graduated from IIT Delhi, and we had on-campus placements directly from US companies in our college. I believe some other colleges like BITS, Triple IT, and a lot of like peer colleges, they have a similar thing. But unfortunately for a lot of companies, for a lot of colleges, that's not the case, and they don't have this. And especially if you're like 22, 23 years old, like you'll never get there. But I can tell you right now, like majority of my colleagues, they aren't from IIT, right? Frankly, I don't. For majority of them, I have no idea what college they went to. And there are a lot of Indians, to be honest, here in US, and both in Microsoft and in Facebook. And the most common way by far is that students, they either with work experience or immediately after college, they choose to do masters in US. Now, the main thing to note here is that it's kind of easier to get into masters in US than it is to get into an IIT, right? Of course, it's not as easy to get into masters in MIT or Stanford, but US is not just MIT and Stanford. US has like hundreds of universities, and a lot of students. I would say actually a majority of colleagues who work at like Facebook or Microsoft didn't go into MIT, Stanford. They went into like one of the many other colleges in US, and I wouldn't necessarily call them tier 3. Like a lot of them are very good, Georgia Tech, Virginia Tech, but they aren't like MIT, Stanford. And getting into Georgia Tech or Virginia Tech and a lot of other colleges, though it's hard, it's not as hard as getting into IIT. So just because you didn't get into IIT, don't think that you won't ever get into Georgia Tech or something. The main thing for getting into colleges, I think first you need to have a pretty decent grade in your college, right? And secondly, you just need to clear the entrance exam good, right? Like there's GRE. And of course, the biggest challenge people face is like it's a lot of money. And I know that a lot of people who came here, like some borrowed it from their parents, of course. Yeah. But lately, like there are schemes like SBI loans and whatnot where there is an interest, right? Like they charge like some 10% interest or something, but they're willing to give loans if you get accepted into a program in US. And to some people, it might seem like a huge risk, right? Like you're taking like a 50 lakh loan or something.
and let's say your parents are like nowhere close to that well off, like, is it fine to pay like 10% interest? I have to say, of course, I can't say that like go for it, like, you have a guaranteed chance, but the chances to get a job in a big tech company once you're already in US is like, let's say, like 100 times higher than if you're sitting in India and wondering how. There is a lot of competition, but the competition in India is much more. Okay. Yeah. US has fewer people, and the people coming here are already like constrained because of visa limitations and whatnot. So once you're here, the situation kind of becomes similar to like if you're in an IIT in India. Companies will come to your college. They have these things called career fairs. It's much easier to get in contact with the company. So by far the biggest challenge which someone from a non-IIT or non-tier 1 college faces, and the main difference is how to get noticed by a company, right? Like, of course, like you can say that like a student from IIT might be better or not better, but let's say that after a few years it's not even true. Like if you put sufficient effort, a lot of my peers who are not from IIT are at least as good as me or even better than me, right? Because they put in a lot of effort. However, they still face some stigma because there's a chance that if I like, or just because of the fact that I have a bigger network of IIT people who are also in like other big tech companies, I can get a recruiter call easier. And that's by far the biggest challenge. So if you do a master in US, you're getting past that big issue. The two main hurdles of getting, one is the visa, right? If you are, the main reason foreign companies don't like to hire overseas is because of visa issues. The visa issues are just too many. The risks are too much. There's visa lotteries and everything. So if they're hired directly from India, it's much harder for the company as well. So basically that's why they just hire very few and only from like 5-10 colleges and nothing else. However, if you have already come to US, a lot of those visa issues, even though you'll still have a visa and everything, but you don't have to compete with all the people in India to get a visa because you already have a student visa. And a student visa to a work visa is much easier to compete. So therefore, as long as you can clear the interview, right? Now it's just about whether you can clear the interview or not. And the starting salaries in a lot of these tech companies pays, in your first year, you'll earn more than the loan you took. Right. So you will be able to pay it off if you can get a job in a big tech. So obviously it's a big risk. I wouldn't necessarily say everyone should do a master, because look, I didn't do one. I didn't have any debt, so I can't say for sure, but I know a lot of my peers, a lot of my colleagues in Microsoft and Facebook came to US in exactly that way, and that's definitely something to consider. Another is like, say you can't afford, and after your college you take a job in like Infosys, TCS, one of the mass MRCs, right? Accenture, whatever. It might be very tempting to think that like your career is over and there's no future whatsoever for you. But first, like, you can have a great future in India itself, but even not in India. Like I know a lot of people who started in Infosys India, then they came to Infosys US working for their client, and then once they are in US, now again, as I said, once you are in US, all the possibilities are yours. Now it's much easier to get noticed than if you're sitting in India by a US company. So you can come in like Infosys US, like working for a client, but in like few months you can just like prepare and get an interview call from a big tech company and get there. So that's like one of the main things of like how to get to US. And then the other question is like how to get noticed by big tech companies. So of course the first one is like, I'll repeat it with, if you are in a good college, there's a good chance that at the end of your like 4-year, 5-year, whatever your degree is, you will have on-campus placements, and you will have a lot of these big tech companies coming to your campus for placement. I had the exact same situation. However, if you're not from one of them, it definitely is hard. And I'll be honest, if you try applying online, the chances are no one will ever reply to you. And actually, that's not just for like non-tier 1 colleges. Even if you're from an IIT and if you try applying to like say Amazon and Microsoft, no one will reply to you. It's only that if they come to your on-campus placement, they will treat you very nicely. But if you try applying online, no one will reply to you. And this is like, actually, I'll give my even when I had worked in Microsoft for 6 years, even when I applied to companies, people still didn't reply to me.
Okay, so some of it can be very demotivating, but the main thing I want to point there is like, if you don't reply from like, if you don't get replies from like going to the website and filling their careers form, don't get demotivated, because I frankly don't even know if anyone is reading that. Sometimes it might even just go to a trash can or something, right? So one of the things is like yeah, you can like, I think Samir, you did a great interview with a Google engineer. He went through and talked about competitive programming. Yeah. So that's of course one of the main ways where students can start, like with HackerRank. You build a profile and you keep doing this competitive programmings, and if you start getting in a good rank, companies will start taking notice. All big companies hang out there. They're always looking out for like people who are getting good rank, and that's one way. However, that does get very competitive as well. So if you can't do well there too, now I'll talk of like, okay, what if you can't do that either, right? I'd say take whatever job you can get out of your college, because one of the main things is like, when you're 19 or 28, might seem like this is how it'll always be, no one will ever reply to you. But once you have 3-4 years of experience, the part of your resume which says IIT versus your college gets less and less important, and what matters more is like, what was the projects you did and where you did, right? So even if you're working at Infosys, if you're working on projects which are like, which are working on like good software design and whatnot, if you're getting promoted there, then there's a chance that like that itself will get you noticed. Another important thing is like, I will say, like, I don't know what the website is in India, but like do networking via things like Meetup or whatever there is, and there is a chance that if you are meeting sufficient people, you'll start intersecting with some people who already work in these companies. Now, one thing I want to say is like, I do get a lot of pings on LinkedIn. People are trying to add me, and I accept a lot of invites, but if you write to me saying that please give me a referral, I most likely won't give it to you, and that's the same for almost everyone. The reason is that if I have not worked with you, or if I don't know you personally, it dilutes the value of my own referral. If I'm referring my friend tomorrow, right, and if I've referred like people from the internet much more, then no one will take my referral seriously from here. So therefore, like, yeah, on the internet, it might not necessarily be a good idea to like ask people for referral. Yeah, please add people. It's fine. Like, I don't think there's anything wrong with just finding random people who work for like a company you want to work and just start adding them. And maybe like keep following them on LinkedIn, see what they do. One of the things is like, lately in India, the startup scene has become very, very good, right? So it's not even necessarily the case that like working for big tech is the best job. Like, you might earn much more working for a small company, and a lot of these companies, like, you don't even know, like, it would be someone in your LinkedIn profile saying like, hey, I have these job openings, right? And maybe you just added them before and they accepted it. The moment you see this, just like tell them that, hey, I'm interested, send them your resume or something. There's a lot of LinkedIn groups, right? You can join all these groups where like, it's for hiring, or you can start collaborating with people, right? You can collaborate in some GitHub project with people. And once you have that, like, once people start knowing you, they'll start responding to you. And especially with some work experience behind you, things are very different when you're like 20 versus 23 versus when you're 25, right? People take notice with your work experience, especially if you're willing to bring something to the table. And if you aren't there where you dream to be, you might have to be a little bit more proactive on these websites like LinkedIn and all. You might have to keep looking at, like, you have to keep expanding your network, and you have to keep looking at like who's like advertising any job openings, or or sometimes like what you can simply do is you can, like how Samir is doing, he's doing a great job, he's running a YouTube channel, right? Like everyone can start like a blog or something, or you can just start like coding a small website, right? Like in your free time. If you can do something, that is a proof in your resume, which is bigger than just the name of any college, that like, look, hey, I coded this website, right? So that if I am hiring tomorrow and I see like, damn, this boy coded this website, so it kind of resolves a lot of those questions. So therefore, these are multiple things you can do, whether to get to US, you can do a master's, you can just try to take the job in Infosys, whatever, come to your client.
And another thing I'll say, this is like kind of going away from tech. However, if one of the aims you have is like, if you want to just go in tech, then discard my plan. But if you want to just become successful in your career, want to earn more money, and I'll be very honest here, there's absolutely nothing wrong with wanting to earn more money. I know it's stigmatized. Some people cannot be very open and they have to say that they're passionate. And look, it's good to be passionate, but you don't have to be super passionate about it. It's as long as you don't hate your job, you can do well. And if you just want to be successful in your life and you want to make money, one of the good things you can do is like after 2-3 years, you can try looking for an MBA. I know a lot of people who went to like, let's say not a tier 1 college, they worked for 2-3 years somewhere, and then when things were not working in their favor, they did an MBA, right? And they go to like heaps of other things like hotel management, a lot of things, and you don't even have to get to an IIM from there. That's, first of all, getting into an IIM is easier than getting into an IIT because like CAT is just easier than JEE, first of all, right? So that, but even if you don't get into an IIM, right, like there's a lot of other colleges, and if you can do a MBA, after that you can get a good job in investment banking, you can get a good job in consulting, or you can actually even join as a product manager in tech companies itself if you want to continue in tech. And there's a very good chance that the career trajectory you'll have now is much quicker than it would have been if you just never did that MBA, right? So yeah, it will move you away from tech. It will probably move you more into a business kind of role, but your salary potential increases much more. And again, it brings that exact same question of like, it's more expensive to do an MBA, right? So you might have to take a loan, but again, the opportunity of your earning is significantly more. So if you have to take a loan, I would say it's much more worth. Like if you have gotten to an IIM, right, you don't even think of it, like you just take the loan, right? But like, yeah, let's say if you get like 95% percentile or anything, you didn't get into an IIM, you get into XLRI or something. In a lot of situations, it makes sense to get that. And if finance is not an issue for you, then don't even think of it. Like if you aren't in the place in your career where you want to be, and you think that like you're kind of hitting the roadblock, you can branch out in multiple ways. And higher education it's a very good way to break out. And I'll actually say one thing here. Like I've been working for 10 years, right? And like for the first few years, right, when I was 25 or something, if I compared myself to people who are not in IIT, like I was like, yeah, like my salary, whatever, was much higher than my peers who are not in IIT. However, now that I've been working for 10 years, a lot of the people in other colleges kind of evened out. So you should think over a long-term horizon, right? And I know it's like much easier said than done, right? When you are not getting offers, it feels like it's the end of the world. Actually, one of the stories I would like to say is like when I was actually trying to get from IIT, I applied for 27 companies and 23 flat out rejected me just by reading my resume. So I had only 4 interviews. In the 4 interviews, I failed one the first day. So I had only 3 more, right? So if I failed all 3, I would have actually no offers in IIT, and that would be like devastating, right? I did everything, I got into IIT and I still. So the thing is though, like now I look at it 10 years later and it all seems so stupid. But of course at that point, like if you tell me that like, oh, don't worry about this, it will seem like, it doesn't seem correct. But if you look at the 10-year horizon, so many friends of mine who were like school friends or whatever didn't get into IIT, didn't even do engineering, right? They went into law, commerce, whatnot, and now they're like earning like 40 lakhs per year in India, or they are in US too. They did masters, they did a lot of stuff, and now some of them are at a much better position than me financially or in their career. They're like a manager, some of them are even a director. So it's definitely not like if you didn't get into an IIT or something, it's the end of the world. There are a lot of ways, and if you look at a 10-year horizon, there's a good chance that you will, like if not overtake, you will probably be there's a good chance you can do at least as good as any other IIT peers. And again, you don't have to compare, right? Like what you want is like, you want to make sure that you lead a good successful life, and the Indian economy is doing very well. You don't even have to come to US to be successful anymore. The startup economy is amazing. Just keep out on lookout. Like most of my friends, even from IIT today, are not in big tech companies. They are in startups, and they are doing very well for themselves. And
I would say, yeah, definitely take advantage of the whole startup economy booming and join Uh-huh. there. Even if the startup doesn't succeed, you might learn just too much. You might make a lot of great contacts, Yeah. and they might be your token to the next big thing. And Yeah. yeah, So, sir, let's move on to the next question. The next question is, sir, in internet there is a lot of resources for preparing interview, like big tech companies interview. So, can you please share some useful resources, and you have used it before? yeah, actually, yeah, that's a great question, Samir. So almost everything I talked about till now was like how to get the interview or how to get noticed, right? The next question is, of course, like, okay, let's say you are getting noticed, how to clear the interview. Right. So here I definitely agree with you. There's a lot of resources. And if you start looking at something like Geeks for Geeks or something, it might seem like it's infinite. Like I remember when I was reading Geeks for Geeks, I was like, okay, nahi ho payega. I was just like, yeah, I give up. Right. So then you have to like definitely look for more targeted resources. So I will say one of the best starting points is this book called Cracking the Coding Interview. Right. It's by Gail Luckman Dowell. It's so the reason it's good is because it's limited. It's only like 100 or 150 things, and it's laid out in a very good structure, right? Like you start with like arrays, then strings or something, and then if you can do those 10 questions for each of those things, it builds a lot of confidence. And not just confidence, like I can say with a good chance that if you do just that book and nothing else, there's a good chance that you will be able to clear at least some tech interviews, like a lot of tech interviews. Yeah. Unfortunately, the landscape of interviews has changed a lot. When I was in 2013, this was the only resource, or there was no LeetCode or almost anything. So if you did only like 20 questions from Cracking the Coding Interview, there's a good chance you would have cleared. Now this is kind of almost the minimum, right? Given that everyone is prepared, therefore like this is kind of a minimum. But still, like if you can get to a point where you can do the questions in Cracking the Code Interview to a good enough level, and one thing I'll say is like, don't just read the solution, try coding them up. Okay, even if you have read the solution, try coding them up. You won't have a debugger and everything in the actual interview. However, that does not mean that you don't have a debugger in your room. At least when you're starting out, use the debugger, use everything as much as possible to the point that you can get fast. When I started out, and forget when I started out in 2013, things are very different then. As I said, you could do only 30 questions. And when I started out, like when I was leaving Microsoft, right, in 2020, after 6 years, even then when I started out, I was not able to do any question. Even after like 7 years of experience, I tried doing even LeetCode easy, and I was like failing to even pass test cases of that. So that's one of the things which, like, if you think that, oh, I can't solve this, I might be very stupid. That's not true. Like, I have IIT, Microsoft, everything, and I still can't solve it. And I'm coding every day for 7 years and I still can't solve it. The main reason is the skill set to solve interviews is very different from what you do in your day-to-day life. It takes your brain a little bit of getting used to doing that, right? But the thing is, like, once I kept doing that for like 2 months or something, like just like practicing with debugger and all, after a while I could start solving like LeetCode mediums without needing to read the solution at all, and like not even needing debugger. I would still probably not be able to pass them on the first try. That's very hard. Like, it almost isn't very, very hard to get there where you can just like solve things on your first try. But I was getting much better where I could just like, I don't have to read the solution. But hey, initially if you're having to read solutions, absolutely fine, don't worry. However, just don't get in a position where you're just seeing the solution and moving on and not doing anything. If you do that, then yeah, it's bad. But if you see the solution, then go open a Visual Studio or NetBeans, whatever IDE you use, code it up without seeing the solution. Okay, try making some test cases. Get to a point where you can at least start doing the easy ones. And apart from Cracking the Code Interview, of course, by far the best resource on the internet is LeetCode, right? I would say don't even bother with Geeks for Geeks and all that. It's just too much. You'll be sitting for 6 months. It's just infinite, right? Just do LeetCode and start with easy, like sorted by difficulty. Start with easy. Don't bother with the mediums. Don't even look at the hards. The hards are just way too hard. Even people like me today, I still can't solve the hard. Okay. And most big tech companies mostly don't ask LeetCode hards anymore. Okay. They sometimes do, but mostly they don't. Okay. So start with the easies. Get to a point where you are comfortable enough doing easies. Okay.
this might take you 10 questions, it might take you 50 questions, all is fine. However, get to a point where, as I said, where you can just like click the submit button and you can pass a question, right? LeetCode says accepted. And it doesn't have to be in your first try, but get to a point where you can do that without seeing the solution, right? Like it's fine. Like in the first few times, of course, you will see the solution and then you can come back and still, I'll say, like even if you saw the solution, then go back to your ID, try it. But once you have done it in the ID, come back to the LeetCode and try to pass it. One of the suggestions I'll give here is like, don't try to pass it on the same day, because sometimes what happens is like, when you've just tried it and when you've just read the solution, it's very fresh in your mind. But if you try it like 2-3 days later, you might forget. So one of the things is like if you, let's say you tried like 4 or 5 questions, you read the solutions, you tried them in the Visual Studio, don't go and submit it today itself. Come back like 2-3 days later for those same questions and try submitting it. See if you can still write it without like seeing the solution. And one thing I do want to emphasize, like a lot of people might think, oh, like I'm asking you to memorize LeetCode. That's not true at all. However, that said, it's not completely wrong either. A lot of questions do come from LeetCode, and it's very stupid for me to say like, oh, don't practice and don't like just like read it like Corman or something and just like, without practice. If you go and compete with a person who has seen the exact same question or done a lot of practice on LeetCode, right, they'll do better, end of story, irrespective of how good your concepts are. So therefore, it is a very good idea to practice and get to a point where given a question which is like LeetCode kind of question, you can pass it. Like you can get accepted. So yeah, as I said, like don't try to submit it on the same day. Give it a few days break. Keep doing other questions as well. But like for the questions you couldn't pass or you got stuck on, come to it in a 2-3 day break. And then after having read the solution, after having passed it in your ID and everything, come back and try to see from scratch if you can pass it again today. If you can't, see the solution, whatever. But again, don't try to pass it the same day. However, once you do that, make a repeated process where you can get to a point where at least for LeetCode easies, you can get to be accepted without seeing the solution. Once you start getting there, this is where things start getting like to a point where you can like start getting comfortable and you can start getting more and more. So I say there are some tabs like on the right in LeetCode, there's this thing like top 100 interview questions. Okay, this is a much concise resource than just trying to like do LeetCode randomly. It says 100, but it's unfortunately 150 questions. Okay, so again, I'll say like once you have started getting good with the easies, take this list of like top 100 questions, again sort it again and again start with easies. Okay, once you can do the easies there, then you start tackling the first mediums. Okay, and sort it by the acceptance rate. I think that's how, like that's the column I use, and sort on the acceptance rate. Now you do the first medium, which has the highest chance of acceptance, right? And if you suddenly see that like you can clear that, your confidence will increase a lot. Yeah. I'm not saying that do this list because this is like a question will most likely come from that, right? That's just the wrong way to think about it. However, what I'm saying is like this list is a good enough compilation of some questions from every data structure which gets asked on, so that if you can do this list comfortably, there is a very good chance any question being asked, you can do any question comfortably, right? So of course LeetCode now has like 2000 questions or something. You can't do 2000 questions, right? You can't even do like 500 questions. It will take forever. It will drive you crazy. So start small. Start with just easies. Once you start getting comfortable easies, go to the top 100 interview questions on LeetCode. Start doing that. Again, sort by acceptance. And then once you see that like, oh, okay, you're getting comfortable, maybe start randomizing. There's this thing called pick one on LeetCode, right? So what you can do is just like click the pick one and then like see how good you're able to do. If you can even get to the point where you're doing these things good, then another thing I'd say is like don't be in a state of like constantly doing more and more, because sometimes it's hard to know when to stop. Yes. At one point when you are starting to do this well, just stop there and start applying. I mean, don't stop, still start preparing, but start applying. Start asking your friends for referrals, start like hunting on LinkedIn, post that I'm open to job openings or whatever. Okay. Also on LinkedIn, there is a setting called open to work. Only recruiters can see it, right? Only recruiters can see it. Your boss can't see it. So make sure that when you're applying, when you're ready,
Hmm. Change that first thing, and then you'll start getting reach out from some recruiters or headhunters. And yeah, as I said, don't keep doing infinitely. After a certain point, also like this number is different from everyone, but like even something as less as 100 could be sufficient. You can just do something as less as 100, and that might be sufficient. The other thing I want to say is, this is if you are a if you're an experienced engineer, right, and you're trying to move companies, then they'll also ask you this thing called system design, Okay. right? And system design is very, very different from lead code kind of questions. Now the question there is like a sample question is like design a Facebook newsfeed, right? And people will be like, oh, I don't know what to design. Like, oh, do I design like the image size? No, they are asking a very different, like a server, backend server architecture of how you can do it in a distributed manner, right? Like the questions are like, okay, how do you design it if it's just like for you and your friend? Okay, but now what if there are 10,000 users? What if there is a million users? Oh. And the interviewer wants to see whether you can understand the challenges of what it takes for a system to scale, right? As you move from just one or like something in your own computer to something in a distributed system. Now, this is a concept which if you're new, you won't be asked almost ever. But if you have like say 3 years of experience, you will be asked this. Best resources for preparing system design, I'll say two of them. One is this course called Grokking the System Design Interview. There is this website called educative.io. They have this, just I think they have only 20 there. You just read them, you get comfortable with it, and once you can do that, that's good. The other resource I'd say is there's these YouTube channels, and most of them are run by Indians, right? So you don't even have to. So one is by this guy called Tushar Roy. He is like a ex-Apple, Amazon Apple engineer, but he has only 5-6 videos. But those 5-6 videos are brilliant, right? Like if you can see them, like you really start understanding what this is about. And then there's this other guy, Gaurav Sen. Okay, he also has a channel. I don't remember the name of the channel, but it's he also helps us understanding a lot of these concepts around distributed system, like caching and like what's LRU cache, all these things which consistent hashing, like things which you might not necessarily know if you haven't been doing this already. And if you see his videos, the concepts start becoming clear. And the third one is this thing called Tech for Dummies by this guy called Narendra. Now this one I'll try to avoid just because he has way too many videos. Right. So if you start doing that, it's again the same challenge, right? Like you keep watching, and you don't know when to stop. He does a good job at explaining his things, but yeah, I'll say start with just this, with Tushar Roy and Gaurav Sen's videos, and then look at this other one, the Grokking the System Design. The main thing I have to tell is the Grokking the System Design is not a free course. That's why I would say like start with the other one. Start with the free resources on YouTube, and then you can jump into that. So yeah, that's the main things. Like lead code, don't go crazy. Just like pick, and cracking the code interview is the book, right? If you want to start in something which is very well organized by like chapters, like arrays, strings, linked lists, and it's also like that important that like today it's almost considered like if you can't solve questions which are in cracking the coding interview, it's kind of almost a minimum expectation that if it's in that book, you should be able to solve it. Unfortunately, that's how it has become. So therefore, it's like, yeah, it's fine if you can't buy the book because you're in college or whatever, you don't have money. So you can look at the ebooks, which has some of the chapters. So you can start from there. But yeah, once you're getting serious in your preparation, just buy the book. You can buy from a second-hand store if you don't have money, right? It should be like 300-400 rupees, not more, from a second-hand shop. And yeah, then definitely just go to lead code, and as I said, like start with the easies, then go to the top 100. And at one point, you just have to decide to stop. You can't keep going. But yeah, while you're talking to recruiters and all, don't stop, because the main thing you have for you is momentum. What you need is like, if you have been practicing every day, if an interviewer asks you a question which you have never seen, it doesn't matter. If you are in the good momentum, you can solve that. However, if you're out of practice, right? Like let's say you're practicing and then you stop practicing, there's a good chance that if you stop practicing for the last 2 months, even if you practice for 5 months before that, you will not be able to solve questions, irrespective of how good you are, because you get rusty. So the main thing is to keep doing it. Like keep the momentum.
And if you want to be like consistent, like even if you're not looking for jobs, there's this like, I think Lead Code has a weekly contest or something. Same with HackerRank, there's like these weekly contests that ensures that you're constantly in that zone where you are never getting like very rusty. That said, if you're doing a full-time job, it's very hard to keep doing that. Like your job takes so much out of you that you don't really want to be solving challenges on Lead Code every week unless you are actually actively looking for a job. So hey everyone, welcome back to another interesting podcast. Guys, आज के हमारे गेस्ट हैं शुभम सर. शुभम सर Amazon में SD2 हैं. तो शुभम सर ने किस तरीके से Amazon ज्वाइन किया, क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहा उस वक्त, और देन उसके बाद उन्होंने किस तरीके से इंटरव्यू प्रिपरेशन करी थी. तो जो ओवरऑल पूरा आप कह सकते हो कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं पास आउट हो चुका हूँ ग्रेजुएशन, अब मुझे ज्वाइन करनी है Amazon, तो बहुत से लोगों की ड्रीम कंपनी होती है Amazon. तो शुभम सर हमें बता रहे होंगे पूरा कंप्लीट रोड मैप, एक एक चीज बता रहे होंगे. सो इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं. सो वेलकम सर, ओवर टू यू सर. थैंक यू. तो पहले तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मेरा नाम शुभम. तो मैं अमेजोन में अराउंड 2.5 ईयर से काम कर रहा हूँ. एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन इंटर्न. मैंने एकदम इंटर्न से शुरुआत करी थी. एंड करेंटली आई रिसेंटली गॉट प्रमोटेड टू SD2. एंड जो मेरा ऑर्ग है वो बेसिकली इट इज कंज्यूमर पेमेंट्स, विच इज बेसिकली कि आप जितने भी आपके पेमेंट मेथड्स आप अमेजोन में यूज करते हैं वो हमारे जापान मार्केट प्लेस के लिए हैं, नॉट फॉर इंडियन कस्टमर्स. बट हम उन पेमेंट मेथड्स को मॉडिफाई या उनको कुछ न्यू पेमेंट मेथड्स ऐड करते हैं कस्टमर्स के लिए. तो ये एक्चुअली मेरा काम है. एंड मैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एकदम इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था. तो आई ज्वाइन अमेजोन एज ए 6 मंथ इंटर्न. जो भी हमारे नॉर्मल प्रोसीजर होता है, हमें ऑनलाइन असेसमेंट देना होता है, उसके बाद हमारे 2 राउंड इंटरव्यूज होते हैं. उसके बाद में फिर आई गॉट कन्वर्टेड टू फुल टाइम एंड देन टू SD2. तो so this was like how I started. So cool sir. So sir, आपने जो एज इंटर्न ज्वाइन किया था, तो ये ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस? नहीं, ये ऑफ कैंपस था. सो बेसिकली मेरा जो कॉलेज है इट इज नॉट लाइक एनी कोई Tier 1 कॉलेज नहीं है जिसमें कंपनी ऑन कैंपस जाती है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों की वरी यही रहती है कि हमारे कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं. एंड हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, बिकॉज आई थिंक अभी के टाइम पे ये चीज़ें और ज़्यादा हो गई हैं ड्यू टू रिसेशन और एवरीथिंग. सो माई वॉज ऑल्सो ऑफ कैंपस. एंड मैं यही बोलूँगा सभी लोगों को कि मतलब इवन इफ यू गेट एनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट, इफ योर कॉलेज इज नॉट Tier 1, आई थिंक यू शुड नॉट सेटल. मतलब अगर आपको ऑन कैंपस मिल भी गया है कोई प्लेसमेंट एंड अगर आप Tier 1 कॉलेज से नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वहाँ पे अगर जितनी भी आपकी ये Tier 1 कंपनीज हैं वो नहीं जाती हैं, तो भी आपको सेटल नहीं होना चाहिए. बिकॉज मेरे पास इसके अलावा एक और ऑफर था, बट जस्ट बिकॉज मेरा भी एक टारगेट आप लोगों की तरह Tier 1 कंपनी में जाने का ही था. तो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी इवन दो वो फुल टाइम ऑफर मुझे नहीं मिला, क्योंकि जनरली हम अप्लाई करते हैं हमारे पास टेस्ट लिंक्स या वो नहीं आते हैं, कई बार रेफरल के बाद भी नहीं आते हैं. काफी लोग रेफरल्स के लिए रीच आउट करते हैं, बट अल्टीमेटली आपको अगर कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड इफ यू कैन ग्रैब इट, तो यू शुड डेफिनेटली टेक इट. जैसे 6 मंथ इंटर्नशिप थी, तो आई टुक द अपॉर्चुनिटी. एंड उसका फायदा ये है कि रिसेंटली जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उसमें कन्वर्जन रेट काफी अच्छा हो चुका है. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप कुछ सिग्निफिकेंटली वो अगर आप ना करें कोई मिस्टेक, तो आई थिंक वी कैन इजीली गेट कन्वर्टेड. So even though if you get any chance to even get as an intern, you should definitely take that opportunity. So that's how I started. I got the opportunity for internship and I did not get any full time directly. So it was an off. Okay. So sir, आपने जब आप इंटर्न आप गए वहाँ पे, तो आपकी प्रिपरेशन क्या क्या थी सर? किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? Got it. हाँ. So this is another very common question जो जनरली हमारे मन में रहता है, मेरे मन में भी था, because I am not somebody जो exceptional competitive programmers होते हैं कॉलेज में. I was not one of them. एंड ऐसी कोई एक्सेप्शनल प्रोफाइल मेरी नहीं है. एंड हर इंटरव्यू के पहले मुझे यही लगता था कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. और वो ड्यू टू दैट रीजन कई बार हम प्रिपेयर्ड होते हुए भी हम वो कॉन्फिडेंस लैक करते हैं. हम कोड तो कर पाते हैं, बट वी लैक इन एक्सप्लेनिंग टू दैट सोल्यूशन टू द इंटरव्यूअर, जिस वजह से ये हमारा एक कई बार इंटरव्यूअर्स को लगता है, बिकॉज नाउ आई आल्सो टेक इंटरव्यूज, एंड ये हमें इमेज देता है कि शायद इसने
क्वेश्चन पहले देखा हुआ है बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, एंड जबकि ऐसा होता नहीं है, इट्स जस्ट कि हम वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे होते हैं उसको ठीक से एक्सप्लेन करने का, या हम अपनी स्किल्स पे कि जो भी चीज हमने यूज करी है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको हर इंटरव्यू के पहले आप उसमें 2 महीने लगाएं, 4 महीने लगाएं, 1 साल लगाएं प्रिपरेशन में, उसके बाद भी आपको ऐसे ही लगने वाला है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो या मतलब आप ऑफकोर्स जितने हमारी लिमिटेड चीजें हमें पढ़नी होती हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें, बट आई वुड से कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। तो जिस टाइम मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइम मेरा इंटर्नशिप का वो था, उसके पहले आई थिंक देयर वाज सम कंपनीज जिससे मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में रिजेक्ट हो चुका था। एज आई सेड आई एम नॉट एनी एक्सेप्शनल पर्सन जिसने ऐसा किया हो, एंड फिर आई गॉट वन ऑफर फ्रॉम अदर कंपनी, एंड उसके बाद में जब ये मुझे चांस मिला इंटर्नशिप का, माय एग्जामिनेशंस वर गोइंग ऑन, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, एंड बीच में मुझे 1 दिन का गैप मिला, तो उसमें आई गेव द इंटरव्यू। सो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्रिपरेशन थी या कुछ भी था, आई वाज नॉट इन टच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड जस्ट आई showed confidence, and yeah, and that's how I got placed as well, like, even though as an intern. But yeah, this is like one of the thing which जो कि मैंने मतलब खुद से फील करी है कि कोई एडिशनल प्रिपरेशन है उसके अलावा, जस्ट अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सेट कर रहे हैं तो दैट विल आल्सो हेल्प। सो या ऐसी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, बट आई विल टॉक अबाउट कि क्या क्या हमें करना चाहिए जस्ट टू गेट दैट मिनिमम सेट, बट या बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। सो गाइस यहाँ पर एक चीज मतलब एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मोस्टली लोग बताते हैं कि हमें ये कर लो, डीएसए कर लो, सीपी कर लो, डीपी कर लो, बट सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि कॉन्फिडेंट लेवल भी उतना ही इंपॉर्टेंट करता है जितनी आपकी प्रिपरेशन करती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, तो आपको इस पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो सर लाइक कोई ऐसी मतलब आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेड वेबसाइट्स या डीएसए के लिए कुछ प्रिपरेशन रिसोर्सेज बता दीजिए। बिल्कुल, तो मैं ये बोलूंगा कि जनरली कुछ हमारी साइट्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप जनरली लोगों से पूछोगे वो आपको बता देंगे कि फॉर एग्जांपल कि आप लीड कोड से शुरू कीजिए और मीडियम लेवल क्वेश्चंस कर लीजिए एंड ऑल दैट, बट आई वुड से कि आप डायरेक्टली ये मत सोचो कि जो इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं मुझे बस वो बता दो कि उतने लेवल में कहाँ से करूँ। जस्ट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं और अब आप ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो जस्ट गो बाय स्टेप। आई वुड से कि आप पहले किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से के साथ कंफर्टेबल हो जाइए, वेदर इट बी जावा, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज आपकी चॉइस की हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो प्रोग्रामिंग करने में, आप उसको सीखिए। उसके सीखने के भी काफी हमारे यूट्यूब पे रिसोर्सेज हैं, हमारी बुक्स हैं, देयर आर इन्फिनिट रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। कोई भी रिसोर्सेज को उठा के आप उसके साथ कंफर्टेबल होइए। फिर जो बेसिक हमारी साइट्स होती है, गीक्स फॉर गीक्स होती है, हैकर रैंक होती है, जिसमें हमारे ऑलरेडी उन्होंने काफी डिस्टिंग्विश कर रखा है टॉपिक वाइज, हमें प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स को कीजिए, एंड उसके बाद में फिर जब आप इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं तो हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी जो साइट्स हैं, इंटरव्यू बिट हो गया या फिर हमारे लीड कोड हो गया, उसके आप जितने भी मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। लाइक देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज, बट आई वुड से कि जस्ट मतलब आप टॉपिक वाइज देखिए कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं एंड किसमें नहीं है। जनरली एक मिसकंसेप्शन और होता है कि ठीक है हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं कॉलेज में, किसी किसी कॉलेज में काफी अच्छा कल्चर होता है, किसी में नहीं होता है, और हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारी टियर 1 कंपनीज में जॉब नहीं लगेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन जो आजकल के बच्चों में होता है कि अगर हम सीपी में अच्छे नहीं है तो हमारी जॉब नहीं लगेगी। सीपी इज नॉट रिक्वायर्ड इन जो भी हमारी एसडी प्रोफाइल्स होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आप बेसिकली फ्रेशर है। तो डीएसए के लिए सीपी में एक्चुअली काफी अदर फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो देना नहीं चाहिए, देना इसलिए चाहिए बिकॉज ये सारी चीजें आपको प्रेशर हैंडल करने के लिए काफी हेल्प करती हैं। अगर आप एक कंपटीशन में बैठे हैं जो कि 3 घंटे से लिमिटेड है, तो आई थिंक उसका प्रेशर हम पे रहता है, और उस प्रेशर को डील करना आई थिंक दैट समहाउ हेल्प्स इन इंटरव्यू। बट ऐसा नहीं है अगर आप उसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छा कर नहीं पाएंगे, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दैट। आप सीपी सब कुछ करिए और उसके बाद में फिर जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट अबाउट इट। डोंट थिंक कि सीपी नहीं है तो नहीं होगा। डीएसए करने के यही तरीके हैं, हमारे जितनी भी बुक्स हैं, या बुक से ज्यादा आई वुड रिकमेंड कि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं साइट्स पे। जैसे मैंने बोला कि अल्टीमेटली लीड कोड या इंटरव्यू बिट पे प्रैक्टिस करते रहिए, मीडियम लेवल क्वेश्चंस, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर एज अ फ्रेशर। नाइस सर, आई थिंक ये जो आपने वेबसाइट्स बताई हैं ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो सर अब बात करते हैं कि जैसे कि अगर सपोज करिए कि अभी एक स्टूडेंट है, उसने जो आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं वेबसाइट्स, इसमें वहां से प्रिपरेशन कर ली मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन, देन अब वो सिलेक्ट जाता है, अप्लाई करता है अमेज़न। तो
आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि उसको रिज्यूमे किस तरीके से बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या मेंशन करना है या नहीं करना। करेक्ट। तो हाँ, दिस इज लाइक ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि जनरली हम रेज्यूमे कॉलेज के टाइम पे हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ें मेंशन करनी है या क्या नहीं करनी है। एंड तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि जब भी हमारे रिक्रूटर्स या कुछ भी, नॉट हमारे, इन जनरल लोग आपका रेज्यूमे देखते हैं, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड यू नीड टू यूज टेम्पलेट्स ऑफ रेज्यूमे इन दैट फॉर्मेट कि जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस है, आपने किसी इंटर्नशिप में काम किया है, या आपके जो भी स्किल सेट है, तो आप ये देखो कि हमारी जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमें एक्चुअली रेज्यूमे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहना चाहिए। हम बस एक टेम्पलेट उठा लेते हैं कॉलेज में एंड वी कीप यूजिंग द सेम रेज्यूमे अगेन एंड अगेन। कई बार रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, कुछ और टाइप के, लाइक बैकएंड प्रोफाइल की अगर जॉब है तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, किसी में अलग होती हैं। एंड आई वुड से इफ यू हैव दैट स्किल्स, आप जो हमारी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं, मतलब जो अगर आपने देखा हो कि नेट पे काफी फेमस टेम्पलेट्स हैं, इफ यू वांट आई कैन इवन शेयर दैट एज वेल, तो उन टेम्पलेट्स को यूज करिए जिसमें आपका स्किल सेट अच्छे से दिख रहा हो। लाइक कोई आपका रेज्यूमे देखे तो एकदम से उसको पता चल जाए कि अच्छा हाँ, यू हैव ऑल दो स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस है, एंड इफ दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड जॉब प्रोफाइल में तो वो हाईलाइट होकर आना चाहिए कि हाँ, मतलब ये चीज आपकी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपकी ये मैच होती है तो जनरली जो हम बाकी चीजों पे ध्यान लगाते हैं ना कि हमारे अचीवमेंट्स क्या होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट अचीवमेंट्स फ्रेशर्स के लिए मैटर नहीं करती हैं। आप ये सोचो कि मैंने किसी फेस्ट में कुछ कोऑर्डिनेट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये आना चाहिए, तो इट इज नॉट। मुझे भी ये लगता था कि हाँ, मतलब ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट रिक्रूटर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको देखना है कि आपकी स्किल्स क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफी अच्छा। तो हम इस तरीके से रेज्यूमे बनाए कि सब कुछ हाईलाइट हो अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल। नाइस सर। देन उसके बाद सर अब ये बताइए कि मान लीजिए कि मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है एसडी प्रोफाइल के लिए, देन यहाँ पर कितने इंटरव्यू प्रिपरेशंस होंगे, और मतलब अगर 3 या 4 राउंड्स होते हैं तो उन राउंड्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट। तो अगर आप SD1 प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंटर्नशिप के लिए कर रहे हैं तो आपके 2 राउंड इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें आपका हायरिंग मैनेजर या जो आपके HR बेसिकली राउंड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। दोनों राउंड आपके कोडिंग रिलेटेड ही होते हैं, दोनों टेक्निकल राउंड्स होंगे। एंड अगर आप SD1 के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके 4 राउंड्स होंगे, जिसमें आपके 2 तो टेक्निकल होंगे, एक आपका हायरिंग मैनेजर होगा जिसमें आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, और एक आपका HR राउंड। तो ये 4 राउंड्स आपके अल्टीमेटली होते हैं। एंड ये दिस इज लाइक फॉर SD1 एंड 2 के लिए बेसिकली टेक्निकल के साथ साथ आपका डिजाइन भी पूछते हैं वो उन्हीं 2 राउंड्स में। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। एसडी2 में सिस्टम डिजाइन से भी रिलेटेड पूछते या हैं, आपको और डिजाइनिंग में प्रॉब्लम्स भी देते हैं कोई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसडी1 एंड एसडी2 इन ओके, अमेज़न। तो ओके, बिकॉज आपने अमेजोन का पूछा है तो फिर मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि अमेजोन एक्चुअली काफी फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ जो भी रोल आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SD1 हैं एंड आपको कुछ लाइक इफ यू आर कैपेबल इनफ कि आप एक डिजाइन हैंडल कर सकते हैं, आप कोई डिजाइन पे काम करना चाहते हैं, तो अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। जनरली हमारे पास ये कंसेप्शन होता है ना कि बिकॉज SD2s को डिजाइन हैंडल करना चाहिए एंड SD1s बेसिकली सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अमेजोन में ऐसा नहीं है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप अपने मैनेजर से बात कीजिए कि मुझे डिजाइन पे काम करना है, वो आपको काम करना है। इन जनरल अगर आप मुझसे पूछोगे कि नॉट इन अमेजोन बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो आई वुड से कि 1 SD1 का काम होता है कि ठीक है, कुछ हमारा बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसके एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे हम उनको डिजाइन दे देते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि हमें क्या फीचर इंप्लीमेंट करना है, एंड दे वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन। दे ऑल्सो वर्क ऑन रिव्यूइंग कोड रिव्यूज एंड एवरीथिंग, वो सब चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिजाइन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे कैन कंट्रीब्यूट। बट जो डिजाइन ओनर्स होते हैं वो SD2 वो जितना भी उनका लीड होता है हमारे डिस्कशंस के, वो लीड SD2 करते हैं। सो दिस इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिकॉज डिसीजंस एंड एवरीथिंग दे कैन कंट्रीब्यूट, बट ओन उनको SD2 करते हैं। सो अल्टीमेटली देयर वो उनकी कॉल होती है SD2। सो दैट इज द डिफरेंस। बट इन Amazon this is very flexible. SD1s can own designs as well, एंड उनके लाइक जो भी उनके करियर ग्रोथ के लिए वो चाहते हैं वो दे कैन वर्क विद देयर मैनेजर। सो या दैट इज द बेनिफिट ऑफ Amazon। तो सर अब थोड़ा सा सैलरी के बारे में बता दीजिए कि अगर एज ए इंटर्न जाते हैं देन क्या ऑफर रहता है SD1 के लिए और SD2 के लिए। Salaries actually, like I'm not allowed to share conversation openly, but generally I would say ki I can like give a hint or so. So for interns I think their stipend is around 80,000, and SD1's ka base Amazon has recently increased and revised, that is a public information so I can share, and so their bases are around 20, and tools ka
I would say 35 plus. I'm not gonna disclose the exact numbers, but तो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो कि इंटर्न्स के लिए क्या है और SD1 के लिए और SD2। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आप समझ में आएगा कि हाँ हमें किस तरीके से ज्वाइन करना है, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने राउंड्स होते हैं, क्या सैलरी मिलती है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर वर्क एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे हमेशा। कूल। सो हाँ, जनरली ये भी लाइक Amazon सुन के थोड़ा बच्चे डर जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मेरी वर्क लाइफ बैलेंस एंड काफी चीजें यहाँ नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट डिपेंड्स कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो कि आपको काम ना करना पड़े एंड वो रहे, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट एज ए फ्रेशर व्हाट आई थिंक इज कि अगर आपको स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बिकॉज जनरली आई वुड से कि अगर दूसरी कंपनीज में जितना मेरी लोगों से बात हुई है, जो भी हुआ है, इट इज वेरी टफ टू गेट अपॉर्चुनिटी लाइक फॉर अ फ्रेशर, बिकॉज आप फ्रेशर होते हो, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है एंड उतना ट्रस्ट आप पे लोग नहीं दिखाते हैं, तो आप शेडो कर रहे होते हो बट आप कुछ टास्क है वो ओन नहीं करते हो, या फिर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते। बट Amazon में थिंग इज कि दे ट्रस्ट इन यू। अगर उन्होंने आपको हायर किया है, दे हैव दैट ट्रस्ट कि आप उन सारे प्रोजेक्ट्स को ओन कर सकते हो, उन पे काम कर सकते हो। तो वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको लाइक कुछ टाइम में आप काम नहीं करोगे, जो भी हो गया, आप आओगे, आप रैंप अप करोगे एंड या यू स्टार्ट वर्किंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट यू कैन फील कि हाँ, मतलब यू कैन से कि थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो मे बी, बिकॉज वी आर कस्टमर ऑब्सेस्ड एंड हमारे पास लाइक हमें क्वालिटी मेंटेन करते हुए चीज़ों को डिलीवर करना होता है। एंड बट आई वुड से कि फॉर अ फ्रेशर आप इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। मतलब जो मेरी ऑनेस्ट एडवाइस रहेगी सभी स्टूडेंट्स से या जो भी फ्रेशर्स हैं, कि स्टार्टिंग के एटलीस्ट कुछ टाइम तक आप ये मत सीखो, मत सोचो, बिकॉज आप बहुत सीखने वाले हो। जितना मैंने इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में सीखा था, लाइक जब मैं लाइक अपने लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप करी थी, सिर्फ इंटर्नशिप के टाइम में मैंने जितना सीखा था, मैंने अपने पूरे कॉलेज के बाकी 3.5 साल नहीं सीखा था। जितना भी मैंने बाकी चीजों से रिसर्च करके या खुद से प्रोजेक्ट्स करके, आई डिड नॉट लर्न दैट मच, जितना मैंने उन 6 महीनों में सीख लिया। बिकॉज आप प्रोडक्शन लेवल चीजों पे काम कर रहे हो, आप सीनियर्स के साथ बैठ रहे हो, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको काफी चीजों का आइडिया हो रहा है। तो जस्ट 1-1.5 साल बाद ना आप खुद से वो डिफरेंस फील करोगे कि ठीक है, मतलब आई थिंक जो बाकी लोग हैं वो किस चीज पे काम कर रहे हैं और आप कितने हाई लेवल चीजों पे काम कर रहे हो। तो आई वुड से कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने मेंटल हेल्थ को भूल जाओ या आप अपनी हेल्थ भूल जाओ, बस पूरे टाइम काम करो, नहीं। वो आपको इंश्योर करनी है, आपको अपने वर्किंग आवर सब कुछ वो इंश्योर करना है, बट एट द सेम टाइम आपको ओपन रहना है कि ठीक है, इफ आई हैव टू पुश माई सेल्फ फॉर सम टाइम, या फिर मुझे कुछ सीखना है, आई वांट टू लर्न, तो जस्ट स्टे क्यूरियस। यहाँ पे हमारा एक लीडरशिप प्रिंसिपल होता है, लर्न एंड बी क्यूरियस। तो जस्ट स्टे क्यूरियस टू लर्न, बिकॉज आप बहुत सीखने वाले हो स्टार्टिंग में जितनी चीजों पे आप काम करोगे। इसलिए पीपल जनरली रेकमेंड टू वर्क ऑन स्टार्टअप्स एज वेल, कि आप वहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं तो ऑफकोर्स लोगों को लगता है कि हमसे गलती ना हो, बिकॉज लोगों का ट्रस्ट है हमारे ऊपर एंड वो सीखते हैं। तो इसका क्वेश्चन आई वुड से कि अगर इट डिपेंड्स आप किससे कंपेयर कर रहे हो एंड आपको कैसा आपके टारगेट्स है। तो जनरली फ्रेशर्स के लिए तो आई वुड रिकमेंड Amazon रियली सो मच, बिकॉज या यहाँ पे आप काफी सीखोगे। सर वेरी नाइस सर। सर एंड में आप कुछ मतलब बोलना चाहेंगे? बोलना मैं यही बोलना चाहूंगा कि जनरली हम कुछ लोगों से कंपेयर करते रहते हैं अपने कॉलेज में, बिकॉज मैंने वो सारी चीजें फेस करी है, तो आई नो कि मे बी बिकॉज प्लेसमेंट्स का टाइम है, कुछ लोग काफी डिजर्विंग होते हैं बिकॉज वो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से काम कर रहे होते हैं एंड अल्टीमेटली मे बी स्टार्टिंग में उनको वो चीज ना मिले, बिकॉज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इंक्लूडिंग एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ वाले जो है वो प्लेस हो रहे हैं और आप नहीं हो पा रहे हैं एंड आपने ज्यादा मेहनत करी है। तो पहली चीज तो ये कि हमें पता नहीं होता कौन कितनी मेहनत करता है एंड किसी का भी प्लेसमेंट देख के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ वाले प्लेस हो रहे हैं और आप नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज आप अपनी मैराथन में हैं, वो अपनी मैराथन में है। मेरे टाइम पे जब मुझे इनिशियल रिजेक्शंस मिले थे तो आई वाज आल्सो फीलिंग दिस कि मोस्टली लोगों का हो गया जिन्होंने काफी बाकी कोडिंग स्टार्ट करी एंड मैं पहले से कर रहा था बट नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। बट अल्टीमेटली फिर आई रियलाइज्ड कि अच्छा, वहां नहीं हुआ, अगर मेरा वहां हो जाता तो शायद मैं इंटर्नशिप के लिए ना जाता, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ माय कि हाँ मुझे जाना है एंड आई नीड टू डू बेटर। एंड जो भी इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे लाइक हैव दैट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, ऑन योर कैरियर पाथ, कि आप जो भी करोगे आप अच्छे ही करोगे। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अभी रिजेक्शंस मिल भी रहे हो तो इट्स ओके, जस्ट वेट फॉर दैट टाइम, जब आपका टाइम आएगा आप अच्छा करोगे। यहाँ पे बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, बहुत जल्दी आपको कोई किसी को भी कभी भी ऑफर मिल जाए, तो जस्ट कीप वर्किंग ऑन दैट पाथ। अगर आपको कोई ऑफर मिल गया है तो भी सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप एक खुद से सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट बिकॉज कि हाँ वी आर प्लेस्ड, उस टैग के लिए मत काम करो। जस्ट स्टे क्यूरियस, अपने इनिशियल ईयर्स में आपको प्लेसमेंट मिल भी जाए
गो फॉर रिसोर्सेज, जितने भी आपके डिजाइन पैटर्न की बुक्स हैं या जो भी हैं, स्टार्ट लर्निंग। आप जितना सीख सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने अचीव कर लिया एंड आपकी रेस खत्म हो गई है। जस्ट स्टे क्यूरियस आपके इनिशियल टाइम में, तो आगे जाके आपका वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप आ जाएगा। वेरी नाइस सर एडवाइस, बहुत बढ़िया एडवाइस आपने दी सर। सो आई होप गाइस कि ये पॉडकास्ट में जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी उतनी मिल चुकी होगी। अगर अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, देन यू कैन कमेंट और मैं कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच सर, आप अपना टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच। So hey guys, I'm back with another new interesting podcast. Today our guest is Chase sir from Netflix. If you want to become a software engineer in Netflix, so this podcast can be for you. So you know guys, Netflix is a super amazing company for working, and if you want to become a software engineer in Netflix, then this podcast can be for you. So let's get started. You know, before that, what you have to do is you share and let's get started. And thank you so much, Chase sir, for coming. Over to you, sir. Sweet. Yeah. So my name's Chase. I graduated from Brigham Young University in 2022, and then I started as a full-time employee at Netflix right after that as a new grad, which is super exciting for me. Yeah, that's just kind of like a quick 5 mile or mile high overview. Superb, sir. Okay. So, sir, suppose, sir, our audience is students and some of like professional workers. They want to become a software engineer in Netflix company. So what they need to do? First step. Yeah, so I think the biggest thing for me, I think there were two like main things that got me to where I am. The first one was having some work experience on my resume. So I had like an internship that I had worked at for a year. It wasn't anything like super prestigious. It was just like a local like coding company. But I think just having something on your resume is really big for getting your first job. So just like work anywhere. It doesn't matter if you're like getting paid a lot or not, or if it's a cool company, just like do your very best to get some work experience on your resume. And try to work in some cool languages. Like I think React is super popular. Like Java is really big with companies. Just any way you can get experience with that, especially work experience, is going to be huge for your resume. So I'd strongly recommend work experience in like popular languages or frameworks is going to be really big. So the first thing is work experience. The second thing I think is interview prep. So interestingly enough, like the industry we live in is one where the interview is very different from the actual job. So being good at coding is not going to necessarily mean that you're actually good at interviewing. So I'm not sure what the best sites are. I use LeetCode quite a bit. I know HackerRank is really popular. Just anything like that. Solve as many of those problems as you can, and that'll prepare you super well for especially like new grad level interviews. If you can do like easy and medium leak codes, I think you're gonna have no problem in the interviews of a lot of like big companies, not Netflix specific, just anywhere you go. So my two recommendations are do anything you can to get work experience, and then grind hard on leak code. So you should have solved like a few hundred leak code problems, and at that point you're gonna be fine. There's a list called NeetCode 500 or NeetCode 100 or something. It's like the top 100 interview questions. I'd strongly recommend going through all of those. Of the people who I know who've gotten like jobs, a lot of their interviews have come straight from that list. So if you can solve that list, you're like 95% there for getting a good job. Wow, amazing, sir. Your advice is super amazing. And sir, let's move on to the next question. The next question is, suppose sir, we have prepared for interview, and from where we should apply for interview? Yeah, so I think for me, I just like thought in my head about like the companies I'd want to work for, and then I went one by one on their sites. And so I had a nice little resume that I worked on. I had shown it to a few of like senior engineer friends, gotten some feedback on it, and then improved it. So make a resume, and then get feedback on your resume. And then once you have like a good resume and you're ready to start doing interviews or whatever, I just went to all these different companies, their websites, and just applied on their site. I found that like job hunting sites are less effective at getting you jobs. So like applying through like maybe LinkedIn or Indeed is another big one. Just like applying there, I've heard they get like tens of thousands of applications for even like basic job openings. So if there's any way you can go to a more like niche application portal, like the company's direct portal,
that's going to be better for you, I think. So just go to their websites, find their career section. Every website has it. Maybe it's in the footer, maybe wherever. Click on that and then just apply on their website. And just apply everywhere. If you're not casting a wide net, you're not going to catch a lot of fish or something. So just go to every company you can think of that's good and just apply. You can always like not work there or not accept an offer or not do their online assessment or whatever, but the first step is just getting some sort of like base level interest. And if you don't have that, you're not going to get anywhere. So apply everywhere. So make a resume, review it with professionals in the field, and then apply to every single company you can. And then once you've applied, to get the actual interview, a lot of companies will have you do online assessments. I've heard there's really hard drop-off of people just not taking online assessments. So like any online assessment you get, do it. It seems so like obvious, but a lot of people just don't do online assessments, and then they miss out on offers they could have gotten. So apply a ton, do your online assessment, and if you do leak code preparation, you'll be set on the online assessments for most of them at least. Wow, superb, sir. So there is question, sir. How much interview rounds there? So after I applied online, I got an online assessment. So that was like the first step, and I think there were 3 or 4 problems. It was, I think, a code signal or something like that. And I did reasonably well on that. And then once I had finished the code signal, I had like a technical screening. So it was a 1-hour like leak code style interview. I don't remember what the question was. I think it was probably a leak code medium. It wasn't dynamic programming. It was a stack question. So I was able to like solve that and do pretty well. And then after that, I had like a round of 3 interviews where there's like 3 interviews back to back. So it was a technical interview, and then a system design interview, and then a like culture fit interview. So then after I finished those, so I originally applied for the back-end position, but I had more front-end experience. So the recruiter's like, hey, we liked how you performed on those interviews. We're going to have you do a front-end interview to see if you'd be a good fit for a front-end role. So I did that. I guess I passed that interview well enough. And then after I had passed the front-end interview, I got put in, had like a little like one-on-one with my future manager. And then that went well. So then I got an offer, and then that was it for me. So it was quite a few interviews, but just all the leak code and stuff prepped me. Definitely like, it'll tell you this, like you should definitely read through, if you're getting to like the close to the end of the interview process and they're saying there's going to be like a culture interview, you should definitely like read up on the culture of the company and see what they're thinking, so that you can like, be prepared for that. Cool, sir. Sir, let's move on to the next question. The next question is, how is the work culture in Netflix? Yeah, so it's pretty chill. So I've heard some horror stories from other companies about people who are like having to work like, I don't know, 60, 70-hour work weeks. But Netflix is definitely not like that. It's really chill. I have coworkers who are working not very many hours a week, but they're able to get their work done, so it works out. Most of the time, I think most people are working probably 35 to 40 hours a week. And you just put in your time, you work hard, and then they're cool about it. It depends on your manager, of course, and your team, but the teams I've heard of are all like pretty like, hey, just work hard and that's good. You don't need to be like giving up your whole life for this. So I think it's pretty good work-life balance. So yeah, I definitely recommend. Wow, super. So sir, let's move on to the next question. The major question is, how much salary I can expect if I join the Netflix? Yeah, so I think it depends on the amount of experience you have. So there's a really cool website called levels.fyi that kind of aggregates a lot of salary data for a lot of the different top companies. I think so the starting salary for like E3, which is entry level like new grad positions. So there's actually E2, which is the intern position. I'm not sure what they make. There's not a ton of like interns. E3 is the new grad. I think all the new grads are starting at around 200K of salary, and then there's some like bonuses up to like 20K or more, depending on if you negotiate or whatever. There's a few other like little small things. So just north of like, I think 200,000 is where you'll be starting. Okay, so sir, sounds really good about the salary. So can you, sir, please tell us about the taxes? Yeah, so it depends on where you're going to be living. So in the United States, the tax system is dependent on so some parts are dependent on your state, some parts are not.
So for federal income tax, I think you end up paying about close to 30%, maybe 25 to 30%, depending on, I don't know exactly how much you make or how much you defer through your 401k, stuff like that. But then there's also, so there's federal tax, and you also have to pay state income tax for some states. So some states don't have income tax. So if you're working remotely in, say, Seattle, I'm fairly confident they don't have an income tax there. So you're gonna be saving a few percent a year. I think my effective tax rate is somewhere between 30 and 40%. So yeah, it's definitely quite steep, but it is what it is, I guess. Because that is the truth. Yeah. Okay. So, sir, can you please give advice to our audience who wants to pursue a career similar to you? Yeah. So I think just like work hard in school, get good grades. I think a lot of what gets you an interview is work experience and then having like a decent GPA. It doesn't need to be a 4.0. Mine certainly wasn't. But if you have like maybe like less than a 2 GPA, you might be in trouble. Less than a 3, also maybe not going to get as many interviews. But if you can show like, you know, a decent GPA, that's going to be good for employers, I think. I think they care a little bit. It doesn't actually matter once you graduate and once you get your first job, but getting your first job, I think it helps. Thank you so much, sir, for your advice. And guys, if you get some useful information about the Netflix, then hit the like and subscribe button and share with your friends also, so they can also understand how to join Netflix. And thank you so much, sir, for your timing and for your advice. Yeah, thanks. सो गाइस होप सो आपने सारी वीडियो देख ली होगी और कुछ ना कुछ आप जरूर सीखें। अब आपको करना एक चीज़ है, आपने अगर एक वीडियो देखी, नो वरीज, गूगल की देखी, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या सीखा, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जिससे कि मैं पढूं, मैं सीखूं और बाकी जितने लोग पढ़ें वो भी सीखें, तो हम सबको पता चले यार, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये बताओ मुझे, ओके। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।